Amin, Jazakallah. Ladies and gentlemen, please stand up for the national anthem. अहमद है, मैं जॉइंट डायरेक्टर पॉलिसी एंड सेक्टर ग्रोथ के तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम में काम कर रहा हूँ. ये वर्कशॉप उसी सिलसिले का हिस्सा है जब दो वर्कशॉप्स कर चुके हैं पाशा के कोलैबोरेशन के साथ, एफपीआर के कोलैबोरेशन के साथ. हमने एक सेशन लाहौर में किया, एक सेशन हमने कराची में किया और उसका काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस रहा. जो ओवरऑल टैक्स के रजीम में चेंज आए और जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मसाइल हैं, उनके सोल्यूशन के हवाले से ये हमारी तीसरी बैठक है. मैं दरख्वास्त करूँगा उस्मान नासिर साहब से, मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान सॉफ्ट एक्सपोर्ट बोर्ड, फॉर द ओपनिंग रिमार्क्स प्लीज सर. Assalamu alaikum ji. Thank you Raza. Thank you for joining us today. आप कौमी तराना देख रहे थे and you are looking at the infrastructure of literally at impossible places. So one thing to appreciate and one thing to realize is all this infrastructure is made possible because of the revenues which are collected by FBR. So those revenues or those monies then flow into development projects and then they help create all this infrastructure that we often take for granted. So understanding the role of FBR, their positive role in this entire cycle is really important. Now, ये सवाल कि जी टैक्सेशन के अंदर इश्यूज़ हैं, टैक्सेशन के अंदर मसाइल हैं, ये हर इंडस्ट्री के हैं. So why are we different? The IT sector of Pakistan, why are we asking कि जी हमारे ये मसाइल अर्जेंट बुनियादों पे काइंडली सॉल्व करें. So this is what we are doing here, an exercise today to understand why IT sector. Number 2, हमारे वो क्या मसाइल हैं जो हम इनसे सोल्यूशन चाहते हैं. नंबर 3, उन मसाइल को सॉल्व ना करने का इम्पैक्ट क्या होगा और करने का इम्पैक्ट क्या होगा. So if you can put up my presentation, I can. PSEB ने पिछले एक साल के अंदर हमने अपना जो IT एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी बनाई, उस IT एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी के हमारे कुछ सप्लाई साइड पिलर्स हैं और कुछ डिमांड साइड पिलर्स हैं. Unlike a lot of strategy, unlike a lot of documents that you see just uploaded somewhere and you download them as PDF and you say there are a lot of pictures and drawing and you imagine ये काम जो लिखे हुए हैं, ये सारे मॉडल्स जो बने हुए हैं, इनमें कुछ डिलीवरेबल भी है, इसमें कुछ काम भी होना है. Unlike that, so I come from that same frustration as you all would. So we started working कि जी इनमें से जितने भी elements हैं
یہ خالی کوئی لکھی ہوئی چیزیں نہیں ہیں, یہ ایگزیکیوشن فیز میں چلی جائیں. So we created some supply side pillars, we created some demand side pillars, اور supply side pillars میں ہم نے ان کو ایگزیکیوٹ کرنا شروع کر دیا. سب سے پہلا ایشو جو تھا ہمارا وہ سپلائی سائڈ کے اوپر ہمارے اسکلڈ ہیومن ریسورس کا تھا. تھینک یو. ہمارا اسکلڈ ہیومن ریسورس کا تھا. اسکلڈ ہیومن ریسورس ان پٹ ہے آئی ٹی انڈسٹری کے لیے. ہم ازیوم کر سکتے ہیں پر پرسن $10,000 پر اینم ٹو اسٹارٹ ود. ہم 1,00,000 بندے پہ لے جائیں the number will be astounding. ہم 5 لاکھ بندے پہ لے جائیں it will solve all our problems. ہم نے اس پہ کام کیا. نمبر 2 ہمارا انفراسٹرکچر پہ تھا. آپ نے کچھ ویڈیوز دیکھیں کہ چھوٹے شہروں کے اندر ہم نے سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارکس بنانے شروع کیے. So we are creating 40 such software technology parks across the country. And the idea is کہ اگر جو بندہ سکھر میں رہتا ہے, جو خاتون لورالائی میں رہتے ہیں, وہ وہیں سے بیٹھ کے آئی ٹی ایکسپورٹس میں حصہ بھی لے سکیں, اپنے لیے ریونیو ارن کر سکیں, لوگوں کو ہائر کر سکیں, اور یہ ہو رہا ہے. So you'll find people in Mithi making thousands of dollars. 2 آسپیکٹ ہیں. ہم ان کو ٹیکس کر دیں, ان کو ٹیکس دینا نہیں آتا, ان کو ٹیکس کے ایشوز کا اندازہ نہیں ہے. ہم ان سے ایکسٹریکٹیو ٹیکسیشن لینا شروع کر دیں, ان کا بیڑا غرق کر دیں. اور دوسرا جو مائنڈ سیٹ ہے, وی لیٹ دیم گرو. کیونکہ تھرپارکر میں میں نے اور آپ نے اس سے پہلے آج تک کچھ نہیں کیا, اور نہ ہمارا کرنے کا کوئی پلان ہے. نہ میرے اس کے لیے وائٹ کالر جابس کریٹ کرنے کا میرے پاس کوئی پلان ہے, نہ آپ کے پاس کوئی پلان ہے, نہ گورنمنٹ کے کسی ادارے کے پاس کوئی پلان ہے. تو اگر وہ خود اپنے لیے کر رہا ہے اور 20-25 لوگوں کی نوکری کا انتظام کر چکا ہے, should we not let him grow or her grow? So that's our second question. Now, then comes our ease of doing business and cost of doing business, جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم ایف بی آر کے ساتھ, اسٹیٹ بینک کے ساتھ, پروونشل ریونیو اتھارٹیز کے ساتھ, اینڈ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ جی ٹیکس کی ڈیفینیشن تو ہارمونائز ہو سکتی ہے نا. اگر ہم جس چیز کو آئی ٹی اینڈ آئی ٹی انیبل سروسز کہتے ہیں, کین دیٹ ناٹ بی اے سنگل تھنگ؟ اس میں کتنا بڑا مشکل کام ہے. All that we need to do is to just sit together and do it. پھر ٹیکسیشن کے ریٹس, صوبوں کا, ایک صوبے کا سیلز ٹیکس الگ ہے, دوسرے صوبے کا سیلز ٹیکس الگ ہے, ان کے ریٹس الگ ہیں. اب ایک کمپنی جس کو ہم گھیر گھار کے ایسٹونیا سے لے آتے ہیں اور کراچی میں ہم اس کو کہتے ہیں جی آپ آفس کھول لیں, اور ہم بڑا تالیاں بجاتے ہیں, اس کو کانولیوٹڈ قسم کے 3 ڈفرینٹ اداروں کے سیلز ٹیکس کے اور انکم ٹیکس کے نوٹس آئے ہوئے ہوتے ہیں. That's not gonna help. تو یہ ایشوز ہم مسلسل ڈسکس کر رہے ہیں. اسٹیٹ بینک کے میٹرز ہیں کہ when you bring in money into Pakistan, how much of that particular amount you can take out from the country. 100 لوگوں کو فون کیے بغیر, it's your money. تو یہ سارے ہم میٹرز ہم ڈسکس کر رہے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس میں. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کے اندر ہم لوگوں کو لونز کے, کولیٹرل فری لونز کے اوپر کس طرح سے ہو سکتا ہے. آئی ٹی انڈسٹری کو کوئی لون نہیں دیتا, کوئی بینک برج فائنینسنگ نہیں کرتے, ان کو سمجھ میں نہیں آتی. کارپوریٹ سیکٹر, ایک بینک کا کارپوریٹ سیکٹر کا شخص جب آتا ہے وہ کہتا ہے جی پلانٹ دکھاؤ, انوینٹری دکھاؤ, مشینری دکھاؤ. ہم کہتے ہیں یہ جو 4 بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ انوینٹری ہے, یہ پلانٹ ہے, یہ مشینری ہے. And the person goes out. تو کہتا ہے جی میں تو ان کو نہیں دے سکتا, I'll just go and put money in government T-bills, اور میں نے 11% وہاں سے کما لینا ہے, so why should I bother? So we are working on all these aspects. پاکستانی کمپنیز کو ایکسپورٹ کرتے ہوئے ہم پاک ایگزم بینک کے ساتھ ہم MOU کر رہے ہیں کہ جب آپ ایکسپورٹ کریں تو آپ کا موبلائزیشن ایڈوانس آپ کو کسٹمر سے نہ مانگنا پڑے. Maybe Pak Exim Bank can fund the mobilization advance, looking at how good your customer is. So we are working on all those elements. اسٹیٹ لائف کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں کہ جہاں ہم اسٹیٹ لائف کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہم گروپ انشورنس کر سکیں آئی ٹی کمپنیز کی, فری لانسرس کی. فری لانسرز بیچارے اگر زندگی بھر ایک چھوٹے شہر میں رہتا ہے اور زندگی بھر وہ فری لانسنگ کرتا ہے, وہ کرتا ہے یا کرتی ہے, ڈونٹ دے ڈیزرو ٹو ریٹائر ود سم سورٹ آف ریٹائرمنٹ انکم؟ دے ڈو. آپ میں بیمار ہو جاتے ہیں تو ہمیں آفس جو ہے وہ میڈیکل ایکسپینس بھی دیتا ہے,
وہ بیمار ہو جاتے ہیں, they not only lose out on their day's wage, ان کے پاس کوئی اور سیفٹی نیٹ بھی نہیں ہے. So we are working on all those things الحمدللہ. ایک ہمارا آخری انسینٹیو جو ہم کام کر رہے ہیں وہ ہے ہمارا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اوپر ہم 40 کمپنیز کو لسٹ کرا رہے ہیں. سو پی ایس سی بی تھرو اے PSDP تھرو اے پلاننگ کمیشن فنڈنگ ہم 40 کمپنیز کو اسٹاک ایکسچینج پہ لے کے جا رہے ہیں. ان کی لسٹنگ کاسٹ PSEB پے کر رہا ہے. اینڈ دی آئیڈیا از کہ جو IT کمپنیز کے شیئرز ہیں وہ مارکیٹ میں ہوں, لوگوں کو IT کمپنیز کا بزنس سمجھ میں آئے. ایسا ہوگا تو ہمارے فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کو IT کمپنیز کا بزنس سمجھ میں آئے گا. ایک اچھی کمپنی کا کیس لٹمس ٹیسٹ بن جائے گا. وہ لٹمس ٹیسٹ کین بی اپلائڈ ٹو اے لاٹ آف کمپنیز, اور وہ ریشیوز کین بی انڈرسٹوڈ تھرو آؤٹ دا فائنینشیل سیکٹر. گورنمنٹ کے ساتھ پچھلے 5 سال سے برکان سعید کی بڑی ایفرٹ تھی, سید احمد کی بڑی ایفرٹ تھی, پاشا کی اوور آل ٹیم کی بہت ایفرٹ تھی کہ آپ کو IT انڈسٹری کو DLTL ٹرم کے اوپر ہی کیش انسینٹیو دیا جائے جتنے کی آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں. سو 3 سال پہلے وہ کیبنٹ سے منظور ہو گیا, لیکن اس کے بعد پھر اس پہ کچھ ہوا نہیں, اس کے فنڈ ایلوکیشن نہیں ہوئی. بڑی محنت کر کے اس سال پاشا کی ٹیم نے, PSEB کی ٹیم نے, علی حسنی صاحب واز بن ورکنگ آن اٹ فار پاسٹ 3 years ایز ویل, رضا سکھیرا has been working on it from IT ministry for past 3 years. اس سال الحمدللہ 4 بلین روپیز کی اس میں ایلوکیشن ہو گئی ہے. تو ہم پچھلے 2 سال کو کمپیئر کر کے گروتھ کے اوپر اپ ٹو 6% آپ نے جو بھی ایکسپورٹ کیا اس کا اپ ٹو 6% گروتھ پرسنٹیجز کے اوپر اس سال انشاءاللہ جنوری میں فیب میں آفر کرنا شروع کر دیں گے. So you apply and the money will start coming into your bank account. Now, while we are doing all of this, if you don't solve taxation and if you don't solve money, movement of money, nothing will fly. So that's why we are here today. Before we start, I can just want to give you کہ جی overall pie size ہے کیا, ہم کیا بات کر رہے ہیں. دنیا میں IT بزنس $5.2 trillion ورتھ ہے. 33% in US, 19% in Europe, roughly 14% in Asia, 11% in Australia. یہ ہے اپارچونٹی سائز, اور یہ ہم کر رہے ہیں. ہم $2 billion کے اوپر PSEB کو اور PSEB کے MD کو شاباشی دے رہے ہیں. I think it's a point of concern for me. Anything less than $20 billion, I believe we are still punching under our weight. Although, اس میں 2-3 چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں. 19% کا گروتھ یہاں آئی ہے, 23% کی گروتھ یہاں آئی ہے, 47% کی گروتھ یہاں آئی ہے. یہ گروتھ کسی بھی بزنس میں آ سکتی ہے. اس بزنس میں یہ گروتھ اچھی کیوں ہے؟ 2 فیکٹر. یہ یلو ایریا جو آپ دیکھ رہے ہیں, اب آپ اس یلو ایریا کو کمپیئر کرتے چلے جائیں. سی ہاؤ اٹس ایڈوانسنگ. ہاف آف اٹ آر یور فری لانسرز. اگین دا پیپل ہو آر سٹنگ ان رانجھر پور اور بھائی پھیرو اور سکھر اور بنو اور نوشہرہ اور اٹک, جن کو آپ اور ہم کاؤنٹ نہیں کرتے تھے, they have brought in $363 million. اور یہ پیسہ $2 billion ہے. نیکسٹ سلائڈ پہ you will see all of your exports, so all of your services exports. یہ آپ کی تمام سروسز ایکسپورٹس کا ٹریڈ بیلنس ہے. آپ نے کتنا بیچا, کتنا خریدا. سو دا گرین لائن آپ نے کیا بیچا ہے, and the blue line آپ نے کیا خریدا ہے. Look at what is happening everywhere else. You are in trade deficit. No matter what you do, whichever domain, you are in trade deficit. گلاس توڑا بارانے والے سوال. There is only one sector where you are in trade surplus. And you are not in trade surplus of 5%, 10% or 20%, you are trade surplus of 74%. And this year, up till now, you're in cumulative trade surplus of 78%.
سال کے آخر تک دس ٹریڈ سرپلس اس سال کا 80% ہو جائے گا. یعنی کہ اگر ہم اس اماؤنٹ کو، اگر ہم اس ٹریڈ کو $10 بلین تک لے جائیں تو نیٹ ٹریڈ سرپلس آپ کا $8 بلین ہوگا. $8 بلین from a single industry which you will put into your government's kitty. آپ $1.5 بلین کے لیے سال میں IMF کے پاس جاتے ہیں. Ladies and gentlemen, this is you. You can take us out of this problem, provided we let you do that. We don't create impedance in your activities. We don't serve you tax notices where they are undue. We don't surprise you with these issues that you should not be surprised with. And we help you do your business. You bring in that money, میرا پیٹرول کا بل ختم ہو جائے گا. You bring in that money, میرے پاور کے دوسرے مسائل حل ہو جائیں گے. You bring in that money, میرے ملک کا ایگزسٹینشیل کرائسس ختم ہو جائے گا. So, IT sector is now the second biggest employer or second biggest business in the country as far as number of companies are concerned. So companies registered with SECP have crossed more than 12,000, and last year, and by this year, میرے پاس دسمبر کے نمبر نہیں آئے, I am assuming it was 12,000 till last year. اب یہ بڑھ کے تقریباً 15-16 ہزار ہو گیا ہوگا. So after trading, we are the second biggest business in the country when the number of companies are concerned. پنجاب میں 5,000, اسلام آباد میں 2,600, سندھ میں 2,600, ایون گلگت بلتستان اینڈ آل دیٹ. اچھا, یہ وہ کمپنی جو ایس سی سی پی پہ رجسٹرڈ ہے, اس کا تقریباً 42 to 50% کمپنیز ایس سی سی پی پہ رجسٹرڈ نہیں ہیں. تو ٹوٹل کر لیجیے اور ٹوٹل کا 25% مائنس کر دیجیے جو شاید ایکٹیو نہیں ہے. اسٹل ایٹ 15,000, 16,000, 17,000 کمپنیز ایزلی. So انڈسٹری اوور ویو, وی آر دا سیکنڈ موسٹ فائنینشلی اٹریکٹیو کنٹری. آپ نے 5th پڑھا تھا ویڈیو کے اوپر, وہ ویڈیو ایک سال پرانے اسٹیٹ ہیں. یو آر ناؤ دا سیکنڈ موسٹ فائنینشلی اٹریکٹیو کنٹری فار آؤٹ سورسنگ سروسز ان دا ورلڈ. یو آر دا سیکنڈ لارجسٹ سپلائر آف آن لائن لیبر ان سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ. یو آر ایکسپورٹنگ ٹو 120+ countries. So اینڈ 6 لاکھ لوگ آپ کے پاس رجسٹرڈ ہیں جو آئی ٹی انڈسٹری کے اندر ہیں, 5 سے 6 لاکھ کے درمیان. تقریباً آپ کے پاس 25,000 گریجویٹس اینولی گریجویٹ کر رہے ہیں جو اس فیلڈ میں جا رہے ہیں. ہم نے اس کی کوالٹی بہتر بنانی ہے, سم لیٹر ٹائم I'll talk about that too. 300 سے زیادہ کمپنیز ہیں جن کے انٹرنیشنل آفیسز ہیں, یا وہ کمپنیز پاکستانی ہیں جن کے انٹرنیشنل آفیسز باہر ہیں, یا وہ باہر کی کمپنیز ہیں جن کے آفیسز پاکستان میں ہیں. So this is our export map looks like. There's a lot of good in that, there's a lot of bad in that. The scary in that is we are a single client company. If you equate the entire Pakistan as a company, we have a single client. And that is USA. So if something bad happens there, we will be in a lot of grief. So our export strategy now is focusing on کہ اس نمبر کو 2 بلین سے 10 بلین تک جب بڑھایا جائے تو وہ 10 بلین میں سے 4 بلین US کا ہو from 1.6 billion today. So it will increase overall, but it will come down in the pie size. It will come down to 40%. So our reliance on a single customer reduces. Now, this was our expectation last year. So on the track to $7 billion in next 2 years, this is what we drafted. So I specifically having this slide here. This slide is 6 months old. This is when I was pleading FBR to discuss with us on how this new tax credit regime would be implemented. And I drew this. And I told them,
that if we let the industry operate the way it is operating today, the green line is the potential. And it's a very valid potential. But if we make any impediments in their way, we'll come down to the red line. I'm proud to tell you, gentlemen, ladies, we have come down to the red line. Now, we have to decide, as managers of our economy, do we have to run after our KPIs, or do we have to help this country? Now, tax credit regime kya hai? Tax credit regime ہماری پرانی رجیم کو چینج کرتی ہے, جہاں پہ ٹیکس ایگزیمشن تھا. ٹیکس ایگزیمشن ہمارا 2022-25 تک کے لیے تھا. ٹیکس ایگزیمشن گائز 25 کے لیے. اگین ہم سے کنسلٹیشن نہیں کی گئی, ہمیں اخبار کے تھرو خبر ملی کہ وہ ختم ہو گیا. فیئر انف. اچھا جی, ٹیکس کریڈٹ رجیم میں پہلے جب ہمارے پاس ایگزیمشن تھی تو پہلے ہوتا یہ تھا کہ آپ اپنا ٹیکس ریٹرن جمع کراتے تھے, آپ اپنے آر فارمز, آپ اپنے کلائنٹ کے جو انوائسز ہیں, یہ تمام سب چیزیں, اپنے بینک اسٹیٹمنٹس, یہ ہر چیز جمع ہوتی تھی پہلے, اور اس کے بعد آپ کو ٹیکس ایگزیمشن ملتا تھا اس پیسے پہ جو آپ پاکستان لائیں, 80% اس پیسے پہ جو آپ پاکستان لائیں. ٹیکس کریڈٹ رجیم میں بھی یہی کچھ ہے, یہی سارے ڈاکومنٹ جمع کرانے. گریٹ, کوئی نئی ڈاکومنٹیشن نہیں, سوائے ایک کے کہ آپ کو سیلز ٹیکس کا ریٹرن بھی جمع کرانا ہے. اب آپ سوچیں گے میرا تو کوئی کام نہیں ہے سیلز ٹیکس سے, میں تو پاکستانی کمپنی ہوں, میں تو یو ایس میں بیچتا ہوں, میرا لینا دینا نہیں ہے سیلز ٹیکس سے. یہاں پہ I never sold anything here in my entire corporate life. Why would I be filing a sales tax return? جواب آتا ہے جی آپ نل فائل کر دیں. لوگ نل فائل کر دیتے ہیں. But then it opens up to you to another authority. In the provinces, nil sales tax فائل کرنا, اس کا آڈٹ کرانا, وہ تمام پروسیس سے گزرنا. We all know and understand what happens there. تو ہمارا ڈے ون سے اسٹانس منسٹری آف آئی ٹی کا اسٹانس یہ تھا کہ اگر کچھ نیا نہیں ہونا تو اس پروسیس کو یا تو بالکل آٹومیٹ رکھیے, اور ہمیں ایشورنس بھی یہی دی گئی کہ جی بالکل آپ نے یہ ڈاکومنٹ ادھر سے آپ اپلوڈ کریں گے, یہ بٹن دبائیں گے, ادھر سے آپ کا سیلز ٹیکس کریڈٹ کا جو ہے آپ کا ایگزیمشن سرٹیفکیٹ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا, آپ جا کے اس کو پرنٹ کریں گے, اپنے بینک کو دیں گے, ایوری تھنگ ول بی ہنکی ڈوری. And we suspected that it would not happen. And we told that day یہ ایسے ہوگا نہیں. Unfortunately وہی ہوا کہ وہ آٹومیٹ نہیں ہو سکا. The commissioners have to take a charge onto themselves کہ جب کسی کو ٹیکس ایگزیمشن دے رہے ہیں یا ان کا ٹیکس کریڈٹ کا سرٹیفکیٹ ایکسیپٹ کر رہے ہیں, تو یہ سارا انہوں نے کہا جی یہ تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہے, ہم یہ کیسے دیں. اور اسلام آباد میں آج بھی موسٹ کمپنیز کو کریڈٹ کا جو کریڈٹ رجیم ہے, اس کا ایگزیمشن سرٹیفکیٹ آج بھی موسٹلی کمپنیز کو نہیں ملا. تو the question is کہ the business is happening as usual. یہ عثمان صاحب یہاں کھڑے ہوئے کیا تقریر کر رہے ہیں, ہم تو اپنا کاروبار کر رہے ہیں, سارے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ. Yes, the business is happening as usual. But you know what is happening? Is most of the IT companies, because they do not have any physical infrastructure whatsoever, no assets, it takes 6 hours to open a business, register a business. Sitting in Pakistan took 6 hours to open a business, and your bank account and your bank licenses and your certifications and your label licenses
In Ireland, you can do this in 6 hours. So when you do it, and you have a European customer, you invoice your European customer उस शाम को जिस वक्त आपको उसने परचेज ऑर्डर दे दिया है और आप इन्वॉइस करने जा रहे हैं, आपको एकदम ख्याल आता है कि जी ये तो सारे बड़े मसाइल हैं. आप शाम को आयरलैंड के अंदर कंपनी खोलते हैं, सुबह तक वो खुल चुकी होती है, आप अगली सुबह उसको वहाँ से इन्वॉइस कर देते हैं. सो द $4 million that was supposed to come into Pakistan goes to Ireland. Absolutely, work is happening as usual. We are losing out on this money. So while we are here today, our target should be how can we bring that money back in. आप लोगों को कोई सवाब नहीं है पैसे वहाँ रखने में. It's just that if we make it easier for you, you'll love to bring that money back here, because वहाँ पे कुछ हो जाएगा, that money will be gone. It will be very hard for you to go into a court case against that authority in that alien country. यहाँ तो फिर हम लोग सब अपने शायद कुछ हो ही जाता है मामला. So we have to make it easier for you. इसी तरह से यही मसला हमारे फ्रीलांसर्स के साथ है. तो इसका जो इम्पैक्ट होता है, मैं अगेन ये बता रहा हूँ कि जी पाकिस्तान से लोग अपना बिजनेस रिपोर्टिंग, अपनी प्रॉफिट रिपोर्टिंग पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट कर देते हैं. पाकिस्तान जस्ट बिकम्स ए कॉस्ट सेंटर. हमारे पास बिजली के बिल और लोगों की तनख्वाहों के पैसे आ रहे होते हैं, प्रॉफिट बुक नहीं हो रहा होता. And I don't blame the industry for that. I blame my system for that. I have to fix it. I have to make it enough competitive, attractive for the businesses that they start considering Pakistan as their profit booking center. यही मसाइल जो हमारे हैं अब वो हमारे फ्रीलांसर्स के साथ हैं. Again, ये last year का number है. This number last year, July में, this number has now ranked up to $363 million. ये वो बच्चे हैं जो जिसको पहला टैक्स का नोटिस आएगा मियाँ वाली में 21 साल की बच्ची को. And literally I tell you the conversation that is going to happen in her household. उसका दुकानदार बाप उसको बोलेगा मैं तो 10 ही नहीं करा, अब मैं किदों बढ़ा ये 8 लाख रुपया दा नोटिस. This is what we are going to do to her. So I recommend we sit down from that perspective. We understand हम क्या अचीव कर रहे हैं, क्या KPI अचीव कर रहे हैं और हम अपने हाथ से क्या गंवा रहे हैं. So today is a good event where we come together and we discuss कि opportunity क्या है. आप इससे कहीं ज़्यादा टैक्स कमा के दे सकते हैं, इससे कहीं ज़्यादा रेवेन्यूज़ कमा के दे सकते हैं. IBM पाकिस्तान में कितने लोग हैं भाई? Guys, anybody has a number? 500? 600? IBM इंडिया में 2.5 लाख लोग हैं. एक्सेंचर पाकिस्तान 50 लोग, 30 लोग की टीम. एक्सेंचर इंडिया 1,80,000 लोगों की टीम. Just look at the numbers. Just look at the opportunity that is there in just the payroll taxation that we are negating ourselves. Just look at the opportunity in creating those employments, those white collar employments. These people would go out and buy something. They'll buy a car, they'll pay a tax. They'll buy, clothing, they'll pay tax. This is the opportunity that we are missing out on by pinching out today on whatever is coming in. So we have to look towards more focus towards what we can actually achieve. I will not go on further. I believe it's now Pasha to please take over and carry the conversation forward. We just show Kiji how can all the government institutions can come together, the private sector can come together, we can sit down, we can look at the bigger picture, and we can achieve bigger goals. Thank you very much for your time today. Thank you, Usman Saab, saying very difficult things in a very balanced way, in a very polite way. अब सबसे गुजारिश रहेगी
کہ ہم نے ایک سسٹمیٹک وے میں اس سیشن کو انشاءاللہ کنڈکٹ کرنا ہے. پینل ڈسکشن بھی ہوگی. وی آر ریئلی تھینکفل ٹو مس عائشہ خالد, چیف کمشنر ریجنل ٹیکس آفیسر, ٹو جوائن us. میم, تھینک یو فار جوائننگ us. وی آر آلسو جوائنڈ بائی مسٹر سجاد اظہر, چیف کمشنر انڈلٹ ریونیو RTO اسلام آباد. سر, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اینڈ آئی ہیو پرائزڈ یو بوتھ the kind of discussion we held back in Lahore and Islamabad, the way those discussion helped us to remove the bottlenecks of the operational matters. تو یہ communication gap جو ہے بہت زیادہ چیزیں اس سے بھی I think remove ہو سکتی ہیں. and we are really thankful to join us. میں بدر خشنود صاحب چیئرمین پاشا سے درخواست کروں گا کہ if you want to say something. بہت شکریہ. السلام علیکم جی. تھینک یو سو مچ. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. آئی تھنک عثمان آپ نے نیریٹو پورا بلڈ کر لیا ہے, بٹ آپ سب کا آنے کا شکریہ. آئی نو اٹس اے ورکنگ ڈے اور بٹ دس از اے جوائنٹ ایفرٹ. اینڈ جیسے عثمان نے کہا, آئی تھنک دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ اینڈ آئی تھنک آئی لائک ٹو اپریشیٹ جو پاشا ٹیم میں پہلے سے کنٹینیوٹی اس چیز کی چلتی آ رہی ہے. برکان بھی ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے فارمر چیئرمین ہیرا بھی ہیں. سو ہم نے یہی ایکسرسائز کراچی اور لاہور میں کی اینڈ وی ہیو ریئلی فیلٹ دا ڈفرینس کہ کتنی جلدی ہماری پروسیسنگ شروع ہو گئی ہے. اور جیسے ابھی عثمان نے ہائی لائٹ کیا کیش ریوارڈ کا اور جو باقی انسینٹیوز ہیں, حسنی صاحب, رضا, سارے آئی مین دیر لاٹس آف پیپل, سیکٹری صاحب ہم سیلف, لائک لیٹرلی میرے خیال ہے میرا آدھا کیلنڈر ہفتے کا تو عثمان نے اور سیکٹری صاحب نے بک کیا ہوتا ہے. ہم نے کوئی نہ کوئی ہمارا پی سیپ کے ساتھ انیشیٹو یا کوئی چیز چل رہی ہوتی ہے وچ از ریئلی ریئلی گڈ. سو آئی تھنک دس از پرابلی دا بیسٹ ٹائم کہ پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر مل کر اکٹھے کام کر رہے ہیں. سو پاشا اینڈ پی صاحب آر ریئلی ورکنگ کلوزلی آن لٹرلی ایوری سنگل بٹ, تاکہ ہم آپ سب کے لیے جو بھی چیلنجز ہیں ان کو ریموو کر سکیں, جو اس میں امپروومنٹس لانی ہے اس پہ کر سکیں. آئی ایم سوری میں اور ہیرا ذرا سے لیٹ تھے. وی جسٹ کیم بیک فرام دا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ. اس وقت آئی کین ٹیل یو دیر آر ملٹیپل انیشیٹیوز بائی دا PM کہ کیسے IT ایکسپورٹس گرو کرنی ہے. IT اینڈ ای کامرس دونوں کے اوپر اس وقت میسو انیشیٹیو ہے. I was there yesterday as well. کل بھی ہم رات کو STZ ٹیم کے ساتھ تھے رات 8 بجے تک. So we are really trying to figure out. So STZ پہ we are still figuring out ministry and Pasha کہ exactly وہ کیا ہو رہا ہے اور ہمیں کیا نیریٹو رکھنا ہے. So we'll come back to you on that. But sorry. On the specifically on the tax thing, sir, آپ دونوں کا شکریہ آنے کا. I think ہمیں صرف آج کا جو ہمارا مین کور آبجیکٹو ہے وچ از سارٹنگ آؤٹ ٹیکس ایگزامپشن تھنگ, بٹ کچھ چیزیں فیسیلیٹیشن کے اینگل سے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ایک ابھی ریسنٹلی میرا ایکسپیرینس ہے, میں نے پہلے کافی زیادہ ویزا آن ارائیولس کرائے. اٹ واز این آف لائن پروسیس, اٹ واز ویری ایزی کہ اگر آپ نے کسی کو باہر سے بلانا ہے. ابھی ہم نے ٹک ٹاک کی ٹیم کو فیسیلیٹیٹ کرنا تھا ٹو کم ٹو پاکستان تاکہ وہ ان کی ان بلاک کی کانورسیشن ہو سکے. 4 لوگوں کے ویزے کے لیے ہم نے 2 بندے 4 دن لگائے تاکہ ویزا آن ارائیول ہو سکے. دا پروسیس از کمبرسم. اٹس آن لائن بٹ اٹ از سپر کمبرسم. سو ایک کمپنی پہلے انویٹیشن ایشو کرتی ہے, اس انویٹیشن کے ساتھ اپنے SECP اور بلا بلا XYZ ڈاکومنٹ لگا کے وہ چیمبر بھیجتی ہے. چیمبر اس کے اوپر ایک الگ انویٹیشن ایشو کرتا ہے. وہ ڈاکومنٹ آپ منسٹری آف کامرس کی نادرا سپورٹڈ ویب سائٹ پہ سبمٹ کرتے ہیں ود فی آن لائن, تو وہ آپ کو 48 آورس کے بعد ایک ایشو کرتے ہیں انویٹیشن. وہ انویٹیشن آپ منسٹری آف انٹیریئر کی نادرا کی بنی ہوئی ویب سائٹ پہ سبمٹ کرتے ہیں تو آپ کو ای ویزا ایشو ہوتا ہے. اینڈ اف یو ڈونٹ نو اینی ون ایٹ نادرا اٹ ٹیکس اے وائل بیکاز ایوری ون سیز کہ یہ ہمارا ہے پورٹل بٹ نادرا چلاتا ہے. اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ, آئی ایم سوری آئی ایم ٹیکنگ نیمز, بٹ اٹ از سو کمبرسم کہ ایک ویزا ایشو کرانا از اے میس. تو دیز آر لاٹ آف تھنگس جو کہ ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اینگل سے جس پہ ہم فوکس کریں, ٹیکسیشن بینگ ون آف دیم. فار ایگزامپل اس وقت ای کامرس کی ٹیکسیشن, فری لانسنگ کی ابھی ہم بات کرتے ہیں, PM سیکریٹریٹ میں یہی بات ہو رہی تھی کہ جو فری لانسرس کے لیے تو کمپنیوں کے لیے پھر سیلس ٹیکس کا آسان ہے, مگر ایک فری لانسر کے لیے سیلس ٹیکس رجسٹریشن از سم تھنگ آف نو ویلیو اینڈ دیٹ از کازنگ اے لاٹ آف برین ڈرین. لٹرلی وہاں بیٹھے فری لانسرز اوپنلی کہہ رہے تھے ہم کیوں پاکستان پیسے لے کر آئیں, وائی ڈو وی نیڈ ٹو ڈو دیٹ, میں کیوں نہ یہ پیسے باہر رکھوں اور وہیں سے بائنانس پہ ڈالوں اور کرپٹو لے لوں. This is exactly the conversation they were having at Prime Minister's Secretariat. What is my incentive? Why should I come to you? You need to fix it for me. And this is what the Prime Minister is now asking. So they have a 3-week window to a lot of things کہ کیسے fix کرنا ہے. So
सो हमें आई थिंक 3 या 4 वीक की विंडो उन्होंने भी दी है कि वी नीड टू गेट थिंग्स सॉर्टेड आउट. एक्सपोर्ट्स की फॉर एग्जांपल आप अमेजोन की लिस्टिंग देख रहे हैं, ई कॉमर्स के ऊपर टैक्सेशन पे, ई कॉमर्स के ऊपर भी एक टैक्स लग गया एक्चुअली, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस के ऊपर भी. सो दिस इज अ लॉट ऑफ इशू. जिस तरह भी आपने उस्मान आई थिंक कंपैरिजन दिखाया जो वैल्यू एडेड का है कि हमारी इंपोर्ट्स कम और एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं. In simple terms, I think that's the most important thing we need to figure out. And I strongly believe कि कुछ नई एडिशन किए बगैर अगर हम सिर्फ प्रोसेसेस ठीक कर दें तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. अगर मल्टीप्लाई नहीं तो डबल तो जरूर कर सकते हैं. इफ आई एम सेफली मेरे ख्याल में हम इजीली कर सकते हैं जस्ट बाय फैसिलिटेटिंग विद द सेम HR, सेम टैलेंट, सेम रिसोर्सेज. आज हमने ये भी हाईलाइट किया, मैंने और हिरा ने PM सेक्रेटेरिएट में, कि एक तरफ हम डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं, IT एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम लैपटॉप्स के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं. हम चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि दुनिया, पाकिस्तान जो है वो सोलर इस्तेमाल करे, हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएं, दूसरी तरफ सोलर पैनल पर टैक्स लगा रहे हैं. सो वी हैड वेरी कैंडिड कॉन्वर्सेशंस लिटरली विद द हाईएस्ट लेवल पीपल एंड वी डू इट एवरी सिंगल डे. कल आई थिंक द काइंड ऑफ फाइट वी हैड, आई एम श्योर कि हिरा और मुझे रात को ब्लड प्रेशर की गोली की जरूरत थी उसके बाद एट द STZ. And that we need to fix as well. But once again, just wanted to, in the interest of time, wanted to really appreciate Pakistan Software Export Board. Thank you very much. And Ministry of IT. कुछ लोग बैठे हैं, सारे Ministry of IT की टीम बैठी है, Secretary साहब, even Minister साहब. Really want to appreciate Minister IT is super on board. उन्होंने हमारे पाशा अवार्ड से भी जिस तरह बात की, जिस तरह उन्होंने जो हमें सपोर्ट करते हैं, we are really thankful कि I think this is probably one of the best examples of public-private partnership कि कैसे काम लेके जाया जा रहा है. और ये चीज़ हम देख रहे हैं कॉमर्स में, ई कॉमर्स की तरफ भी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से, जहाँ नेशनल ई कॉमर्स काउंसिल पे भी यही काम हो रहा है. सो रियली वांटेड टू अप्रिशिएट आप दोनों का, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का. हमारे सवाल मुश्किल होंगे मगर हमारा मकसद आपके साथ सॉल्व करना है. सो वी वुड लव टू हैव योर कोऑपरेशन कि आप हमें जैसे गाइड करेंगे, वी विल लव टू सपोर्ट इट. बट हम कोशिश करेंगे कि हम हार्ड क्वेश्चन जो हैं वो सॉफ्टवेयर तरीके में आपसे प्रेजेंट कर सकें, जस्ट टू सॉल्व इंडस्ट्रीज प्रॉब्लम. द होल आइडिया इज टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स, डोमेस्टिक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. ये दो चीज़ें हमारे सिंपल आइडियाज़ हैं जिस पे हम फोकस करना चाह रहे हैं, ताकि डॉक्यूमेंटेशन भी बढ़ सके आपके लिए और हमारे लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की इंप्रूवमेंट भी आ सके. सो दीज आर 2 सिंपल थिंग्स. थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आप सबको. थैंक यू बदर. मेरा ख्याल है हमारे सेशन के बाद आपको ब्लड प्रेशर की पिल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम मॉडरेट कर रहे हैं एंड इंशाल्लाह विल बी स्ट्राइकिंग बैलेंस टू कम्युनिकेट, टू टेक द सेशन अहेड इन अ वेरी गुड वे. अगली प्रेजेंटेशन भी बड़ी क्रिटिकल है. हिरा ज़ैनब, सेक्रेटरी जनरल पाशा, विल बी प्रेजेंटिंग द केसेस. शी हैज़ बीन डूइंग रिसर्च बिफोर एवरी सेशन. लाहौर और कराची में भी जो सेशन हुए उससे पहले हिरा ने काफ़ी एक्सटेंसिव रिसर्च करके जो ऑपरेशनल इशूज़ थे उनको कंपाइल किया. सो लेट्स लुक एट हर प्रेजेंटेशन. Assalamu alaikum sabko. While the presentation is being displayed, मेरा नाम हिरा ज़ैनब है. I am Secretary General at Pakistan Software Houses Association. So आज जब मैं बात कर रही हूँ, I am speaking on the behalf of more than 1,000 companies that are registered with Pasha from IT and IT-enabled service industry. सबसे पहले huge shout out and thank you for PSEB for facilitating and organizing these sessions. We had very interesting, really helpful sessions in Karachi and Lahore, and we really appreciate FPR team from Islamabad as well to join us today, and we look forward. The way we see is कि आपका यहाँ पे आना is the first step towards a stronger, collaboration of IT industry with FPR. So huge round of applause for FPR, Ministry of IT and PSEB for taking the step forward in collaboration. उस्मान ने काफ़ी IT industry का background set कर दिया है. I will not take more time on that, but I think itna we have begun to realize that IT industry is the future of Pakistan. We created a mark when during COVID-19, other industries had challenges.
IT industry is the industry which showed great promise and great potential. And more importantly, इस वक्त 25,000 graduates यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं, उसमें सिर्फ 10% सिर्फ 2,500 हैं जो कि इंडस्ट्री के लिए रेडी हैं. मगर डिलेमा इस वक्त इंडस्ट्री का ये नहीं है कि जॉब्स नहीं हैं, इस वक्त इंडस्ट्री का डिलेमा ये है कि लोग नहीं हैं. So with this huge promise and potential, how can we really take this industry forward? What steps can we do to reach the potential for this industry? Isme, Usman has already shared a background. IT industry is the unique industry जिसमें fresh graduate की भी जो salary है वो हमारे middle income level पे जाके होती है. 50,000 rupees is an average salary of fresh graduate. And if we look at the case study of India, 6 million families were pushed to middle income just because of the IT industry. And out of the $2.1 billion, $1 billion is mainly primarily used for the payroll. So as this industry grows, we are looking at the economic growth of Pakistan. We are looking at the middle income जो sector है उसकी growth, and we are looking at reduction of poverty in Pakistan. इसी तरह से अगर हम देखें कि the way how IT industry compares with the other industries, तो each and every individual in IT industry is bringing in for more revenue than other industries. मगर माजरा कुछ यूं है कि there is a fundamental difference between how IT industry operates and other industries operate. If we take a step back, and there is a reason why I'm sharing it, because it's the mindset that comes with the IT industry. बाकी की industries की जो demands है वो infrastructure driven है. बाकी की इंडस्ट्रीज़ की जो डिमांड है वो इंडस्ट्रियल डिमांड्स हैं, मगर आईटी इंडस्ट्री की डिमांड नॉलेज इकोनॉमी के साथ लिंक्ड है. यहाँ पे कंट्री परसेप्शन ज़्यादा मैटर करता है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी ज़्यादा मैटर करती है. क्यों? क्योंकि इफ़ दे आर नॉट गेटिंग दोज बेनिफिट्स इन अ कंट्री, it's easier for a company, IT company, to move to another country. So होता क्या है? इसका solution क्या है? Solution ये है कि instead of regulating or trying to penalize, we have to incentivize the IT industry because it has the growth, it has the solution to a lot of economic problems which Pakistan is facing at the moment. And if that doesn't happen, तो it just creates. इसका जो original solution Pakistan Software Houses Association ने propose किया था in order to incentivize, and we understand government's perspective of regulations and reporting, वो था STZ, जिसमें reporting ensure होगी and ease of doing business भी कम होगा. While that solution is still in the implementation stage, and IT industry had the exemption till 2025, one fine day in March, we woke up to the news, saying कि presidential ordinance pass हुआ है और वो exemption जो हमें 2025 तक मिली हुई है वो mid of fiscal year में remove हो गई है. This created big uncertainty and chaos in all of our companies, क्योंकि mid of fiscal year में remove होने का मतलब कि उन्होंने जितनी planning की थी, जितनी उनके, and we have clients abroad, so जितनी clients के साथ communication थी, जितनी चीज़ें थी, suddenly it was all a question that how will it work. But more importantly, question tax से कहीं ज़्यादा इस बात पे था कि गवर्नमेंट की तरफ से जो inconsistent policy में consistency and continuity ensure हो रही है या नहीं हो रही है.
and that creates more frustration, that creates more chaos. I will not go into more details. I think everyone by now, because now we have been into this change of regime for the past 6 months, so everyone is now familiar with how the regime works and how regime has changed. Earlier it used to be simple, एक reporting process होती थी, और इस reporting process के साथ भी companies used to get multiple notices and multiple things. But now one fundamental change that has happened is कि पूरे process में negotiations with the FBR officers have been added. How it's affecting is कि वो तमाम companies which were ready to go to the next level are now struggling with basic ease of doing business issues on daily basis. तो अभी current status की तरफ आ जाते हैं. Regime change हो गई. As Pasha, we have been working with the industry. So we ran a survey asking कि कितनी companies हैं जिनको certificate issue हो चुका है और कितनी companies हैं जिनको नहीं issue हुआ. When we ran the survey first time, back in, I think, August or September, only 10% of the companies had gotten the exemption certificate. This was alarming for us, because जब regime change हुई थी, तो it was committed and it was promised कि 15 days के अंदर companies will get the exemption certificate by law. After that, we had an FBR session in Karachi. I would like to specifically highlight the Chief Commissioner hai wahan pe, Dr. Aftab Imam, who took special interest, and after that, FBR Karachi ki team has been regularly in touch with Pasha and has been, and bahut si misunderstandings industry ki side se bhi ho sakti hain, but the idea is to work for FBR and Pasha and the IT industry to work. Iske baad we had a session in Lahore. We took another status. लाहौर में उस वक़्त सबसे ज़्यादा लो केसेस जा रहे थे, but after the session in Lahore as well, 3% से we saw clear improvement. Islamabad is a very interesting region, and we are here सबसे end पे, क्योंकि अगर हम data देखें, तो इस वक़्त, by the way, as per the latest status, 53% of the companies have still not gotten the exemption certificate. Even though a lot of effort has gone into it, still there are a lot of companies which have not gotten it. मगर अगर हम September 15th का status देखें, तो Islamabad region was performing better than Karachi and Lahore. And all the companies which were applying for exemption certificate in Islamabad were facing less of issues. And that was a good thing for us. So हमने Karachi Lahore पे focus किया. अगर हम अक्टूबर 10th का स्टेटस देखें, इस्लामाबाद फिर भी वहीं पे खड़ा हुआ था. कराची लाहौर इम्प्रूव हो गए, इस्लामाबाद फिर भी वहीं पे था. और अगर हम आज का स्टेटस देखें, तो इस्लामाबाद में स्लाइटली 18 से 20% पे चला गया. कराची लाहौर have shown significant and tremendous improvement in the exemption certificate की issuance. And even the ones जिसमें नहीं issue हुए, they are coordinating with us. मगर we are not seeing that much progress in Islamabad region. लेकिन issues क्या हैं, मसले कहाँ पे हैं? I'll summarize. सबसे पहला issue इस वक्त तो ये है कि there is a huge delay in the award of exemption certificate. Even right now, today, I have a list of more than 20 companies in Islamabad which applied for exemption 4 months ago. 4 months ago. And they still have not heard back on their application. By law, FBR needs to respond within the 15 days. मगर unfortunately, वो नहीं आ सका. इसी तरह से अगर हम second issue पे जाएं, तो the next problem is that companies are getting rejection without clarity.
After working with FPR, we understand that there's a list of standard documents which need to be provided. And unfortunately, when companies apply for the exemption certificate first time, तो वो सारे documents नहीं submit कराती. मगर they are not given that chance and they directly receive a rejection order जिसमें सिर्फ लिखा होगा rejected. And they don't know कि उनकी application में क्या missing था और next step क्या है. And unless they work with Pasha, unless they keep going in the cycle. इस पे जो solutions हमारे कराची लाहौर में हुए हैं मैं वो भी share करूँगी. जो third और ये सबसे बड़ा pressing and concerning dilemma है, which is that companies are being asked to provide all sorts of documents that exist on the earth. 26% of the companies were asked to provide client contracts, which are not legally required to be provided to get the exemption certificate. And the way how it creates the, हम बात कर रहे थे, एक businessman है, which wants to, really take his company to the next level, contribute to Pakistan, IT industry का part है, really excited, really energetic. One fine day उसको पता चलता है पहले तो regime change होगी, still wondering कि अच्छा कैसे होगा, नहीं फिर सिर्फ एक process apply करना है. Process पे apply किया, उसके बाद उनको आया नहीं आपकी एप्लीकेशन में ये 3 डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हैं. उन्होंने वो 3 डॉक्यूमेंट्स जवाब दिए, फिर उसके बाद उनको 2 महीने बाद आया, 2 महीने इंतज़ार किए, 2 महीने के बाद आया अब आप क्लाइंट के कॉन्ट्रैक्ट्स दें. The cycle that companies are going through in this entire process is where the entire concern for the industry lies. ये जो ease of doing business में हम लेके जा रहे हैं. And one interesting dilemma that the companies are facing is कि वो exemption certificates पहले मिल रहे थे, असूलन मिलने थे 1 साल के, लेकिन कुछ companies थी जिनको मिल गए exemption certificate, मगर उनको मिले 6 महीनों के. उनके अब expire हो गए, अब दोबारा से उन्होंने apply करना है. And then the ones which are getting these days are getting for 3 months. And that makes them question the entire process all over again. Solutions पे आ जाते हैं. Again, I would like to specifically highlight Karachi and Lahore because they have really been role models in the process. Lahore में Chief Commissioner जो अहमद शुजा थे, उसके साथ जो commissioners भी थे, उनकी team की पूरे सारे लोग थे. They have been really helpful. जो उन्होंने सबसे पहली एक्टिविटी ये की थी कि they defined the process of creating awareness among the team, commissioners and जो field officers हैं, कि कौन से जो standard documents हैं जिनकी requirement है for getting the exemption certificate. ये requirement और ये understanding exist at the headquarter level. Magar sometimes it's not translated to the field officers, and ye wali cheez, this needs to be standardized so that companies are not asked for multiple and repetitive documents. Second cheez, jo ke Karachi and Lahore mein hui hai, ke they nominated a dedicated person for IT industry. Unke one of their commissioners who was dealing or who was having, चाहे वो RTO के हों या CTO के हों, who was having multiple issues, उन्होंने उनको nominate किया as the focal point for Pasha and for IT industry. Third, हमारी recommendation ये है कि जो rejection notices हैं, उसमें at least ये explain किया जाए कि किन grounds पर rejection है, ताकि company can reapply and can address those gaps. Fourth, हमारी recommendation भी है और request भी है कि FPR के portal में we can always extract के जब companies ने apply किया था exemption certificate में वो किस date पे था और अभी currently क्या date है, and
they should be monitoring कि कितनी companies हैं जिनको अभी तक exemption certificate नहीं मिला. Karachi, Lahore में, because they had access to those lists, they shared those lists with us, and specifically बहुत से cases में companies के ही जो submission थी वो incomplete थी. So I'm not saying कि companies का मसला नहीं होता, sometimes companies का भी मसला होता है. Magar, the way how we can move forward is if we are working together and we are resolving those issues on a continuous basis. The next recommendation is that IT and ITS ki definition we have standardized at headquarter level. That definition needs to be communicated to all the field officers as well. A lot of our companies are facing this issue कि जिसमें उनको field officer सिर्फ ये कह देते हैं कि आप तो IT company है ही नहीं, जबकि वो IT company है. So यहाँ पे वो चीज़ आ जाती है. Then we want to obviously improve mechanism to escalate and report issues, but more importantly, as you mentioned, we have to really evaluate the time taken toward the certificates. While we are talking about FPR के साथ हमारी एक और conversation जो FPR इस्लामाबाद के साथ ही चल रही है, वो point of sale system पे चल रही है, जहाँ पे exemption के case में we had a tough time in the beginning, but then improvement in Karachi and Lahore. Point of sale system के case में our experience has been great. The day we, I want to mention कि हमने उनको letter लिखा, अगले दिन के अंदर उनका response आ गया, and they had reviewed all our recommendations for compliance of paid up capital. So we are working with them. So conclusion कुछ यूँ है कि as Usman ने भी बोला, IT industry is ready to go to the next level. Will you support us in our journey? And we appreciate FBR team to come today. We look forward to working with FBR and resolving all these issues. Thank you. Thank you, Hira, for a well researched and well articulated presentation. हमेशा की तरह जो 2 सेशंस रहे हैं, जो हीरा की रिसर्च है वो हमेशा से बहुत पिन पॉइंट करती है प्रॉब्लम को, और इसी वजह से वो मेरे ख्याल में हम रिजॉल्व कर पाए हैं लाहौर ऑफिस और इस्लामाबाद ऑफिस की वजह से. हम एक छोटी सी पैनल डिस्कशन करेंगे लाइक फॉर 15 to 20 minutes ओनली, एंड टू हैव द ओपन फोरम जहां हम कुछ सवालात के जवाब करेंगे, एंड देन वी वुड रिक्वेस्ट के मैम आशा आप और सेक्रेटरी साहब कलेक्टिवली क्लोज करें सेशन. सो वी आर एंटरिंग इन द फाइनल सेशन. जो पैनल है, पैनल के सेशन से पहले मैं एक छोटी सी स्लाइड दिखाना चाह रहा हूँ जो थॉट प्रोसेस चल रहा है. बीइंग अ पॉलिसी पर्सन हम उधर क्या सोच रहे होते हैं. आई वुड रिक्वेस्ट, अगर प्रेजेंटेशन की स्लाइड मैंने शेयर की थी, इफ समवन कैन शेयर दैट. कैन यू शेयर द स्लाइड फॉर नाउ या हम लेटर? इफ इट्स नॉट रेडी हम बाद में भी कर सकते हैं. ओके, सो आई जस्ट वांटेड टू शो द स्लाइड. पर्पस उसका ये है कि MNCs अगर इधर आए हैं, उस्मान ने उसके हवाले से बात की, बदर ने मुख्तलिफ बात की, हम जितनी फैसिलिटेशन करेंगे उस फैसिलिटेशन से इन्वेस्टमेंट का क्या डायरेक्ट लिंक हो रहा है वो हमने मैप करने की कोशिश की एक स्लाइड के अंदर. आई डोंट नो इफ इट्स रेडी. सो थैंक यू. इट्स जस्ट सिंपल. हमने एक टाइमलाइन एक XYZ MNC का बनाया हुआ है, और मैंने ये लाहौर और कराची सेशंस में भी शेयर किया है. एंड द पर्पस वी प्रेजेंट सच केस टू आवर FPR कोलीग इज दैट कि वो थॉट प्रोसेस क्या है जो बीइंग अ पॉलिसी पर्सन हम देख रहे होते हैं, बिकॉज वी विल बी इंटरेक्टिंग विद द न्यू इन्वेस्टर्स कमिंग इन. इस्लामाबाद में एक कंपनी, एक MNC का ऑफिस है, उनकी टीम ने 2004 में इधर काम स्टार्ट किया. 2004 से लेकर 2009 तक हम हाई सिक्योरिटी रिस्क और हाई टेररिज्म इंटरेस्ट में थे. तो जब इन्वेस्टमेंट की बात होती थी फॉरेन कंपनीज के बोर्ड्स में जब डिस्कशन होती थी, सो दे ऑलवेज ट्राई टू टॉक अबाउट के, और ऑब्वियसली किल डाउन हो जाता था प्रपोजल, क्योंकि वी वर इन दैट इंडेक्स और यहाँ इन्वेस्टमेंट लैंड नहीं हो पा रही थी. सो जो इस्लामाबाद में टीम बैठी हुई थी उसी ने GCC इंडिया बनाया, इंडिया में टीम खड़ी की जो इस्लामाबाद में बैठ के, वो कराची लाहौर में भी कर सकते थे उस टाइम. GCC मनीला उन्होंने खड़ा किया, GCC प्राग उन्होंने खड़ा किया. 2009 तक 3 मुख्तलिफ मुल्कों में इस्लामाबाद की टीम ने बैठ के उधर सेटअप्स खड़े किए उसी MNC के. 2011 के बाद हम हाई फाइनेंशियल रिस्क में, हमारा जो EODB है वो लो है, फैटअप के मसले, इन सारे मसलों के साथ
उसी टीम को जाके उस ग्लोबल लीडरशिप के साथ बोर्ड मीटिंग्स में बैठना पड़ता है और डिफेंड करना पड़ता है. एंड दे हैव बीन दे हैव बीन फेसिंग द टैक्स इश्यूज. उसके बावजूद 2012 में उन्होंने जीसीसी लाहौर खोल लिया. एंड अगेन आई थिंक इस्लामाबाद ऑफिस भी उन्होंने एक्सपेंड किया विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 4 million प्लस इन 4 million USD इन्वेस्टमेंट. आई थिंक हमें सलाम करना चाहिए कि इन सब मसाइल के बावजूद जहाँ वो जिस तरह कंसिस्टेंसी से पुश कर रहे हैं. एंड दैट थॉट दैट वी वुड लाइक टू शेयर विद यू कि अगर वो ग्लोबल मीटिंग चल रही है जहाँ हमारे कंपीटिंग कंट्रीज के भी स्टेक होल्डर्स बैठे हुए हैं, they are sitting in Indians as well, and rest of their board members, board colleagues as well, and they've always wanted to hit the proposal coming out of Islamabad. How can we collectively enable that in our policy initiatives, in our operational initiatives, कि कम से कम इस तरह के मसाइल में हम उनको help out कर सकें. With that, I would now like to request our honorable members panel पे जो हमें join करेंगे. I would like to request Usman Nasir Saab, Managing Director, PSB, to please join us for the panel discussion. Then we would like to request Burkan Saeed Saab, Ex-Chairman Pasha, to join us for the panel discussion. I would like to request Sajjad Azhar Saab, Commissioner, Inland Revenue, to join us for the panel discussion, sir, please. Ali Hasni Saab, sir, please join us. चेयरमैन तो एक्स चेयरमैन भी. अच्छा. So let Burkan sit. उसमें presentation हाँ, बताना चाहूँ. ठीक. सर आइए. So we are having one participant online, Sharifuddin Khilji Saab, Pakistan Software Export Board's tax consultant. He has been of a great support to us. जितनी भी फाइनेंस बिल की अमेंडमेंट्स थी, जितनी हम FER कोलीग्स के साथ जब बैठे हुए थे, जब फाइनेंस बिल अमेंड किया जा रहा था, जो मीटिंग्स हो रही थी, जो डिस्कशंस हो रही थी, उसमें हमें गाइड करते रहे ताकि ऑपरेशनल जो रिलैक्सेशन है वो किसी हद तक प्रोवाइड की जा सके. शरीफुद्दीन खिलजी साहब ने हमें जूम पे ज्वाइन किया हुआ. राइट जी, ही इज कनेक्टेड टू अस. हमें सुन पा रहे हैं? खिलजी साहब, I hope you can hear me. I would like to start from Khilji Saab. Sir, we had the session in Lahore, we had the session in Karachi. जो ऑपरेशनल चीज़ें रिजॉल्व होना शुरू हुई, मैं चाहूँगा कि पॉजिटिव नोट पे वो किस तरह, क्योंकि बिगर टैक्स कंसल्टेंट आपने खुद देखी, वो किस तरह रिजॉल्व हुई ताकि जो इस्लामाबाद के हमारे कोलीग्स बैठे हुए हैं FBR के, उनके लिए एक गाइडेंस हो सके ऑपरेशनल लेवल पे किन चीज़ों ने हेल्प आउट किया. इफ़ यू कैन स्टार्ट विद दैट प्लीज़. Assalamu alaikum and thank you everybody. I hope I can be heard loud and clear. जो जिस
ابھی تو ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اور جو سٹیز ہیں جہاں پر اسمالر سٹیز ہیں, سے فیصل آباد, جہلم, اور جیسے ایم ڈی صاحب نے کہا تھا پارکر وغیرہ میں, تو وہاں پر تو ایگزیمشنز جو ہے ابھی اسلام آباد میں تو شاید 1% بہتر ہے, لیکن ان شہروں میں بالکل بھی نہیں ہے. تو صرف اسلام آباد تو ایف بی آر ہیڈ کوارٹر تک بھی رضا سکھیرا صاحب کے ذریعے ہم یہ آواز پہنچانا چاہیں گے کہ ان شہروں میں بھی کوئی سنوائی کی جائے. جی رضا صاحب. Right. Thank you, Khilji Saab, for the detailed analysis. Before I move to Hosni Saab, Hira, can you confirm that I think we didn't get any certification issued for freelancers yet? ابھی تک یہ bottleneck ہے یہ تینوں جگہوں پہ. Right. I would like to go to Ali Hosni Saab, Director Operations Pakistan Software Export Board, who have been working with us and have been guiding us کہ کس طرح چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے. Sir, if you can suggest جو بھی ہماری لرننگ ہے فرام دا لاہور سیشن, فرام دا کراچی سیشن, آج بھی ایف آئی آر کولیگس ہیں, فرام دا پرسپیکٹو آف پی ایس بی, واٹ ڈو یو تھنک ہاؤ کین وی جسٹ آٹومیٹ اٹ, وی کین جسٹ, اب جس طرح ایک ایگزامپل انہوں نے شیئر کی تھی ہیرا نے, مارچ 2022 میں اسی کمپنی نے پھر اسی سائیکل سے دوبارہ گزرنا ہے. ہاؤ کین پی ایس بی فیسیلیٹیٹ دیٹ ہینڈ ہولڈنگ ٹو دا ایف پی آر؟ دیکھیں, انڈسٹری کے ساتھ کلوز انٹریکشن بڑا کریٹیکل ہے. جب آپ کو کوئی مسئلے مسائل آئیں, پلیز ڈو شیئر ود پی ایس سی بی اینڈ ود پاشا, کیونکہ ہم کنٹینیوسلی مانیٹر کر رہے ہیں جو ایشوز آ رہے ہیں اور وہ تاکہ ہائی لائٹ کیے جائیں. ابھی جیسے خلجی صاحب نے آپ کے ساتھ کچھ ایگزامپلس شیئر کیے, وی ہیڈ اے کیس ان سیال کوٹ, اس میں انہوں نے کہا کہ جی آپ تو ایگزمپشن آپ کو ملے گی نہیں, آپ کو ہم نے ٹیکس کریڈٹ دیا ہے, جب آپ ریٹرنز کرائیں گے تو اس وقت پھر آپ ٹیکس کریڈٹ مانگیں. تو ایشوز آتے ہیں, بٹ وی وڈ لائک کہ آپ لوگ وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں, امیجیٹلی شیئر کریں اور ڈاکیومنٹیشن شیئر کریں, سو وی کین ریزالو دوز میٹرز along with FBR and provincial tax authorities. کیونکہ جب مسئلہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, جب مسئلہ ایسکلیٹ کیا جاتا ہے, تو پھر وہ مسئلہ دیکھا جا سکتا ہے فرام ایف بی آر سائڈ ایز ویل ایز فرام آر سائڈ کہ اس میں کوئی جینون ریزن ہے. اگر جینون ریزن ہے تو وہ پھر کمپنی کو ایکسپلین کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے یہ ڈاکیومنٹ نہیں دیا یا یہ آپ چیز غلط بھری ہے, اس کو آپ ٹھیک کر کے لائیں. اور اگر ایشو جو ہے وہ ہماری ٹیکس اتھارٹیز کی سائڈ پہ ہے تو دین دے کین ورک ٹورڈز ریزالونگ اٹ. تو یہ ایک برج بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے دوران. رائٹ. بفور آئی گو ٹو برکان, کچھ عرصہ پہلے آپ کا فیس بک پہ اسٹیٹس تھا کہ اتنی سنگل ونڈوز بن گئی ہے, ان سارے کے لیے ایک سنگل ونڈو چاہیے ہوگی. تو میں نے تو پرپوز کیا تھا اف یو کین ہیو سم کائنڈ آف, let's not call it a single window, but some kind of platform where we can interact in a good way. So if you can, want to take your Facebook status ahead from this point with the solution offers. زیادہ تر پاکستان میں سنگل ونڈو کا کانسیپٹ رجسٹریشنز اور ان چیزوں کے پوائنٹ آف ویو سے چل رہا ہے, بٹ جو ریگولر انٹریکشنز ہیں اداروں کے ساتھ اس کے پوائنٹ آف ویو سے مسئلے مسائل ہیں. اور آئی تھنک ٹیکس کریڈٹ رجیم میں بھی جو مین پرابلم ہوا, بیکاز when I was the chairman we were taking it up with the finance minister, we had multiple meetings with the chairman PR, دو chairman سے I think different time پہ ہماری میٹنگ ہوئی, اور we understand کہ یہ ٹیکس کریڈٹ رجیم جو ہے یہ IMF کے کہنے پہ لگائی گئی اور ہمیں یہی ریزن دیا گیا. بٹ کیونکہ FBR ایک انٹرنل ادارہ تھا پاکستان کا, تو ہمیں یہ سیٹسفیکشن اور گارنٹی دی گئی کہ جی ایوری تھنگ ول بی ٹیکن کیئر آف, ایوری تھنگ ول بی اسٹریم لائن. پاشا نے اس وقت کافی آواز اٹھائی, آئی تھنک آئی کیم آن ملٹیپل ٹیلی ویژن شوز کہ جی اٹ از ناٹ گونا ورک, اینڈ ناؤ آئی تھنک وی سی دیٹ ایز ویل دیٹ لاٹ آف کمپنیز آر 1% یا وہ اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے, بٹ لاٹ آف کمپنیز گیٹ unnerved with the process that is there, and unfortunately a lot of at the FPR level probably it is seen as an opportunity to investigate and see whether they are right business or not, where the audit process is meant for that. تو اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ because that opportunity is there, اور ایک آپ کو کوآرڈینیشن کا بھی مسئلہ نظر آ رہا ہے across FBR, which is کہ you talk to chairman FBR and you find out that it is not propagated to the commissioner, or every commissioner has his own point of view of how to deal. So وہ آپ ایشوز کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ ایک کمشنر کے پاس آپ جائیں گے وہ آپ کہے گا یہ میرے جورسڈکشن نہیں ہے, دوسرے کے پاس آپ جائیں گے. تو آئی تھنک
ऑटोमेशन जिस तरह आपने सिंगल विंडो की बात की, हमारा एडवाइस उस वक्त भी ये था कि why don't you make it automated, because our system unfortunately whenever there is dealing with the government for the last 4 years, what I have seen in Pakistan is that we are generally, we start with everything is haram till proven halal, whereas the reality should be that everything is halal till proven haram. So we try to look everything from a negative mentality, with a negative mindset, and ever anything comes to anyone in the bureaucracy کہ جی میں نے یہ اپروو کرنا ہے, تو وہ پھر اس کو جو ہے نا اس کے سارے جو ہے نا وہ اسپیکٹ کھول لیں گے, اینڈ ایون ٹو دا پوائنٹ آف کہ جی کانٹریکٹ لے کے آئیں. اب بہت ساری کمپنیز اس وقت ان کے ہیڈ آفسز امریکہ میں ہیں فار ایگزامپل, اینڈ اسٹونیا میں لوگوں نے کھول لی ہیں, دبئی میں لوگوں نے کھول لی ہیں, فار آبویس ریزنس, بیکاز دا ایز آف پاکستان, ایز آف بزنس ان پاکستان از ناٹ ٹو دا لیول. ہمارے پاس پے پیل نہیں ہمیں ملتا, یہاں پہ اسٹرائپ نہیں ہمیں ملتا, ہم نے اپنے انٹرنیشنل اسٹاف کو پے کرنا ہوتا ہے, پاکستان میں پیسے لے آئیں واپس لے جانے کا مسئلہ ہو جاتا ہے, ڈالر کے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں. اب کانٹریکٹ آپ اپنی پیرنٹ کمپنی کا کانٹریکٹ لائیں گے تو وہ کہے گا یہ آپ اپنے آپ سے کانٹریکٹ کیا ہوا آپ نے. سو دیر از آئی تھنک ناٹ نیڈ آف انڈرسٹینڈنگ. میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس میں کوئی غلط نیت ہے کسی کی. آئی تھنک اٹس مور آف ہاؤ وی ورک ایز اے نیشن. اینڈ آئی تھنک دیر از, جس طرح علی نے بات کی, آئی تھنک واٹ وی نیڈ ٹو ڈو از کہ اسلام آباد اور کراچی میں بھی, لاہور اور کراچی میں بھی ہمارا جو ایف بی آر کے ساتھ ایکسپیرینس رہا, وہ یہ تھا کہ ونس دیر از اے انڈرسٹینڈنگ ایٹ دیٹ کمیونیکیشن اینڈ دیٹ برج از دیئر, تھنگس ڈو بیکم ایزیئر. سو آئی تھنک دس از اے گڈ ایکٹیویٹی دیٹ وی آر ڈوئنگ فرام پی ایس سی بی, فرام آر پارٹ, اور ایف بی آر سے بڑے زبردست لوگ آ جائے ہوئے ہیں. اینڈ آئی تھنک what we need to do is کہ we just need to share our side the picture, because ایک چیز میں ضرور کہوں گا that last 1 year that I have seen in the government, everybody in the government knows that if the IT export sector does not perform, our finance minister knows this, if it does not perform, we are going to continue going to IMF, our dollar is going to continue to increase. For us, the biggest potential in Pakistan is the human resource capital that we have, the millions of young people that we have, and we need to convert our mindset to, in an export sector, from the taxation mindset to the dollar trade deficit mindset, کہ اگر ہم پاکستان میں کسی طرح 10, 20, 30 بلین ڈالر لے آتے ہیں تو that's just like oil for us, because وہ جو بچہ گھر بیٹھ کے کام کر رہا ہے اس کو لیپ ٹاپ کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے. اس نے سال میں صرف ایک لیپ ٹاپ لینا ہے, ایک انٹرنیٹ لینا. وہ ایک الگ سٹوری ہے کہ ہم نے اس پہ بھی ٹیکس لگا دیا, لیپ ٹاپ پہ بھی ٹیکس لگا دیا, بٹ خیر دیٹس اسٹل ون ٹائم. سو اٹس لائک آئل, کہ آپ سعودی عرب, مڈل ایسٹ, ان کے پاس آئل ہے, وہ اپنے عوام پہ کوئی ٹیکس نہیں لگاتے, بیکاز دے ہیو سو مینی ایکسٹرا ڈالرز. اب انہوں نے خیر لگانا شروع کر دیا بیکاز ان کا آئل ختم ہو رہا ہے یا ان کو ڈر لگا ہوا ہے. بٹ the people, this industry is like oil for us, and we need to treat it the same way. And if we also start looking at it from a taxation opportunity, the cause will be lost, because jis tarah Badr ne shuru mein kaha کہ the industry, the IT industry has so many options abroad to open up companies there. Our effort, Pasha's effort, PSCB's effort, ministry effort is simple: to convert also Pakistan from just a cost center to a profit center, to convert it to a place where we are not able to just keep our employees here, but also to park our profits here in Pakistan. And that is only going to be possible with the ease of business. That is going to happen. Otherwise, everybody has option and they are comfortably using it. Thank you, Ji. Right, on that oil point, Usman was giving a presentation yesterday and was telling someone جو سعودی عربیہ کی آئل سے کی ایکسپورٹ سے شاید انڈیا کی آئی ٹی ایکسپورٹس بڑھ گئی ہیں. اگر میں غلط نہیں کہہ رہا, گوگل کر لیجیے گا, غلط ہو تو بتا بھی دیجیے گا تاکہ میں دوبارہ کوٹ نہ کروں گا, بٹ اٹ واز کوٹڈ. سو میں ریکویسٹ کروں گا سجاد اظہر صاحب کو, کمشنر ان لینڈ ریونیو. آئی ڈو انڈرسٹینڈ سر, آپ نے بھی جس طرح بتایا آپ سے انٹریکشن ہو رہا تھا سیشن سے پہلے, یو ہیو ریسنٹلی لینڈیڈ ان دس پوزیشن اینڈ یو ول ٹیک سم ٹائم ٹو گیٹ نو واٹس گوئنگ اراؤنڈ. لیکن آپ نے گفتگو سنی, ہیرا کی پریزنٹیشن بھی دیکھی, اینڈ دا کائنڈ آف سپورٹ وی گاٹ فرام لاہور آفس اینڈ کراچی آفس ایز ویل. سو ناؤ فلور ٹو یو فار یور ویوز پلیز.
Thank you very much, Ji. Thank you very much. First of all, I would like to thank for inviting us on this important meeting, because it will improve the. Thank you very much for inviting us to join this important event, because it will improve the coordination and cooperation level between the FPR and the IT sector. We understand that the current account deficit is the biggest issue right now, and IT sector can improve the current account position of Pakistan substantially. So we need to give an enabling environment to the IT industry, and amongst the various factors of ease of doing business, the taxation is one of the factors which might hinder the smooth progress of IT industry. تو اس سلسلے میں جو بھی پریزنٹیشن بھی دی گئی ہیں اور جو بات چیت کی ہے میرے کولیگز نے، اس میں جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ امپلیمنٹیشن کا ایشو ہے اسلام آباد کا، اور کیونکہ لاٹ آف ایپلیکیشنز ہیو آئیدر بین ناٹ رسپونڈیڈ اور ریجیکٹیڈ وداؤٹ اینی گیونگ اینی ڈیٹیلڈ ریزنس. تو اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ وی کین اپوائنٹ اے فوکل پرسن فرام ریجنل ٹیکس آفس اسلام آباد. آپ کا بھی فوکل پرسن ہو جائے، اور ہم بیٹھ کے جو بھی کمپنیز ہیں آپ کی یہاں پہ، یا جو بھی ٹیکس پیئرز ہیں جنہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے، اینڈ ہو آر آئیدر ناٹ ریسیونگ اینی رسپانس فرام دا کنسرن کمشنر اور دیر اپلیکیشنز ہیو بین ریجیکٹیڈ وداؤٹ اینی ریزن. تو اس میں یہ ہوگا کہ ہم اس لسٹ کو جو آپ ہم سے شیئر کریں گے، ہم ایک فارملائز کر لیتے ہیں اس ارینجمنٹ کو. آپ کے فوکل پرسن جو ہیں وہ ہمارے فوکل پرسن کے ساتھ ان ٹچ رہیں، اور جو بھی ایشوز ہیں امپلیمنٹیشن کے وی کین جوائنٹلی سارٹ دیم آؤٹ. تو دس از آل آئی ہیو ٹو سے ان دس ریگارڈ. Thank you, sir, for announcing the focal person activity. And I think this is the one point جو دونوں آفیسز تھے وہاں اسی ایکٹیویٹی سے آئی اسپیکنگ اسٹارٹ ہوئی اور چیزیں ریزالو ہونا شروع ہوئی. عثمان ناصر صاحب کو میں چاہوں گا کہ بفور وی اوپن دا فلور فار دا کویسچن، عثمان صاحب، دا ون تھنگ وچ وی ہیو بین ٹاکنگ ایوری ویئر، آج صبح آپ کی پلاننگ کمیشن کے پریزنٹیشن میں یو آر سٹنگ ود دا لیجسلیٹرز یسٹرڈے، وی ور ٹاکنگ ٹو دیم، اور ہر جگہ پہ رائٹ فرام ٹو دا ٹاپ ٹیئر، ایون کہ پرائم منسٹر کے سامنے بیٹھ کے بھی، فائنانس منسٹر کے سامنے بھی جب بیٹھ کے ہم نے بات کی ہے، دس از ناٹ اے ٹریڈیشنل سیکٹر، اٹ نیڈیڈ ٹو بی ڈیلٹ ڈفرینٹلی. ایک مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ چاہیے. ناؤ وی انڈرسٹینڈ دا ون پوائنٹ دیٹ دس از ون considerably one tiny sector from rest of the, you talk about FMCG, you talk about textiles and other sectors, ان سے ہم ابھی چھوٹے ہیں، اور اسی طرح وہ پرائورٹی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں اور گورنمنٹ کی پالیسیز میں بھی چینج ہوتی ہیں. فرام دا پالیسی پرسپیکٹیو اٹ از ٹیکن کیئر آف دیٹ. ہاؤ کین PSB help it? How can we hand hold FPR colleagues by understanding the very mindset we need to opt for this sector? ہر کوئی اس میں جو خاص بات ہے نا، ہر کوئی جا کے یہی کہتا ہے کہ میرا اور میرا سیکٹر اسپیشل ہے، I can turn around things. So, putting ourselves in their shoes as well. True. نہیں، تھینک یو رضا. اور جو ہم مائنڈ سیٹ کی بات کر رہے ہیں نا، ہم یہی کنورسیشن کر رہے ہیں. دیکھیے، جب FBR میں کسی کے پاس یہ ڈسکریشنری پاور ہے، ہمیں فرام دی آؤٹ سائڈ، جب تک میں آپ کی طرح باہر بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے لگتا تھا ڈسکریشنری پاور تو وہ بڑا انجوائے کرتا ہے. یہ ڈسکریشنری پاور اس کے لیے اتنا بڑا بار ہے، اتنا بڑا اس کے لیے بوجھ ہے، آپ سوچ نہیں سکتے اس بارے میں. کہ اگر کل کو پتہ چل جائے، فار انسٹنس مجھے یہاں بیٹھ کے اکثر IT بزنس کا نہیں سمجھ میں آ پاتا کہ یہ IT بزنس ہے یا نہیں ہے، اور اگر کل کو جو ڈسکریشنری پاور ایک ٹیکس کمشنر کو یا ٹیکس انسپیکٹر کو دی گئی ہے، اور وہ اس کو ایکسرسائز کر لے، اور آپ کسی پہ بنا ہوا ٹیکس کو ایگزیمپٹ کر دیں، now this is going to bring a lot of grief and a lot of trouble for that particular officer. So while we understand this کہ یہ سب چیزیں اچھی ہونی چاہیے، ہم جو بات کریں کہ مائنڈ سیٹ کی، وہ مائنڈ سیٹ کی بات کریں فرام دا ویری ٹاپ. From the very top this needs to be delivered, and this needs to be understood
کہ جی اس سیکٹر کو ظاہر سی بات ہے کہ ہم جج نہیں کر سکتے. اٹس اے ویری ڈفرینٹ سیکٹر. It's very new for a lot of people in our government ecosystem to understand it. تو جب اکثر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا اور اس کی بنا کے اوپر کوئی کل کو کوئی غلطی کر جائے, کوئی ٹیکس ایجنٹ, کوئی ٹیکس کمشنر, اور ہم اس کو سزا دے دیں اس بات کے اوپر, تو ان کے لیے بھی بہت مشکل ہے. سو دی آئیڈیا از کہ جی کچھ ٹائم کے لیے, اگلے 3, 4, 5 سال کے لیے, وی لک ایٹ اٹ this particular industry in a different light. We look at it as we look any strategic industry. جب آپ کو ٹینک منگوانا ہوتا ہے اور جنگ کھڑی ہوتی ہے تو آپ یہ نہیں پوچھ رہے ہوتے کہ تم نے اس کا جو ہے وہ ٹیکس بھرا یا نہیں بھرا. سملرلی دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ہمیشہ دنیا میں کبھی 100 سال 200 سال کے بعد ایک ٹرانسفارمیشنل ٹیکنالوجی آتی تھی اور اس سے دنیا بدل جاتی تھی. اس وقت دنیا میں 5 ٹرانسفارمیشنل ٹیکنالوجیز ایک ساتھ کھڑی ہیں. Either we take benefit of them and we ride that wave and we deliver ourselves on the other side smartly, یا we miss this wave as well. جیسے پہلے بھی ہوتا رہا ہے جی, انڈیا آگے بڑھ گیا, بنگلہ دیش آگے بڑھ گیا, ہم سب دیکھ رہے ہیں, تالیاں بجا رہے ہیں. But this time we can't afford to do that. So we have to help FBR. We have to create this noise from within کہ ایف بی آر کی مدد ہو سکے. یہ دیکھیں, یہ سارا انفراسٹرکچر جو سب کچھ میں جو بتا تھا قومی ترانے والی بات, یہ سارا انفراسٹرکچر ایف بی آر کے جمع کیے ہوئے پیسے سے بنتا ہے. دس از ناٹ فری لنچ. تو ہم وہ مائنڈ سیٹ چینج کر کے فرام دی ویری ٹاپ کہ جی ان کی جزا سزا میں اس سیکٹر کو تھوڑے دیر کے لیے ہم اس کو آئسولیٹ کر دیں, اس بیسس پہ کچھ ٹائم اس کو چیزوں کو چلنے دیں. یہاں پہ ہم 20 بلین 10 بلین 20 بلین تک ان چیزوں کو لے جائیں, یہ چیزیں افرمڈ ہو جائیں ہمارے سسٹمز کے اندر. اینڈ دین وی اسٹارٹ کریٹنگ لاز اینڈ وی اسٹارٹ کریٹنگ پالیسیز اینڈ وی اسٹارٹ تھنکنگ کہ اب ہم نے اس کے ساتھ کس طرح سے اس کو آگے لے کے ہم نے اس کو شیپ کرنا ہے. ہیونگ سیڈ دس, جو ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے نا کہ دیکھیے ٹیکس از ناٹ آلویز اے کاسٹ. Tax is an strategic weapon in your trade war. When you are competing against countries, tax can be utilized to actually gain business from the region, from your competitors. India نے کتنا ٹیکس لگایا ہوا ہے, 4% نیچے کر دو. ان کی پالیسیز کیا ہیں, ان سے بہتر پالیسیز بنا دو. That's how you attract, and that's exactly the story of Ireland is right in front of us. A lot of people laugh it off, but there was this country looking at financial ruins at the start of 2011, 2010, about to declare bankruptcy. They turned themselves around and they said کہ جی کیا انڈسٹری ہے دنیا میں جہاں پہ سب سے زیادہ جہاں پہ ہم بینیفٹ دے سکتے ہیں. They looked at the Forbes 100 and said more than 62 companies of the Forbes 100 are IT and telecom. انہوں نے کہا جی ہم نے IT and telecom کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے. 12.5% انہوں نے کہا جی سنگل ٹیکس ہے 12.5% آئی ٹی کے لیے, آئی ٹی سیکٹر کے لیے. That's how they started. They started on that policy. They started doing double tax treaties with Canada and with US, and they sold that double tax treaty Canada اور US سے کرنے کے بعد to their European counterpart. They created a web of double tax treaties on both sides. And then they said کہ جی آپ نے بزنس کرنا ہے for a Chicago company into Frankfurt. You open a Dublin office, you pay 12.5% tax here, and you don't have to pay any tax either in Frankfurt or in Chicago. By doing that, they got LinkedIn, they got Facebook, they got Microsoft, they got plethora of companies to come and register in Dublin for their financial reporting purposes. Within 5-year terms, the country which was at the verge of financial collapse became the fastest growing economy of European Union. If they can do it with 40 odd million or 50 odd million population, I don't know, and with that high cost of delivering these services, imagine what we can achieve
with 220 million odd population, you know, with services sector, और जिसमें जो pricing है हमारी वो 1/3 और 1/4 है, actually 70% हम benefit दे सकते हैं. अगर आप same business US में करें और same business पाकिस्तान में करें तो cost का benefit 70% है. आप 70% कॉस्ट का बेनिफिट दे सकते हैं, यूथ अपने तमाम लोगों को एम्प्लॉय कर सकते हैं, लोगों को एक नए काम पे लगा सकते हैं. The idea is ours. I mean, either they go and join a disruptive force, or they bring money for Pakistan. They make all of us prosperous. Right. So शुरू सर, मतलब सजाद साहब कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, प्लीज. देखिए सर, मैं कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ जो एमडी साहब ने कहा है. पाकिस्तान देखें, वी हैव टू स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन द टैक्सेशन एंड द ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ. क्योंकि हमारी जो फिस्कल जो एनवायरनमेंट है हमारा, वो एज सच इतना फेवरेबल नहीं है जितना दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ में आप देख रहे हैं. आफ्टर द NFC अवार्ड आपने देखा होगा 12th अमेंडमेंट के बाद हम तकरीबन अपना 57% जो है रेवेन्यू है वो प्रोविंसेस को दे देते हैं. जो हमारे पास बच जाता है उससे हम डेट सर्विसिंग करते हैं और डेवलपमेंट प्रोग्राम रन कर लेते हैं. और इस साल में, इस जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, इसमें को 4 ट्रिलियन रुपीस की फाइनेंसिंग है, डेफिसिट फाइनेंसिंग जो हमने अरेंज करनी है. हैविंग सेड दिस, टैक्सेशन देखें, टैक्सेशन इज़ नेसेसरी टू रन द स्टेट अफेयर्स, बट एट द सेम टाइम टैक्सेशन इस तरह से ना हो कि जैसे अब आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि जी एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट नहीं इशू हो रहा और बाकी जो प्रोसीजरल जो इश्यूज़ हैं वो. जहाँ तक टैक्सेशन लॉज की बात है, वो तो देखें, वो तो साल में जब प्रोसेस होता है उसमें आप अपनी इनपुट दें. जब फाइनेंस बिल बनता है, जब पार्लियामेंट में मई जून में जब प्रेजेंट होता है, तो जो भी स्ट्रेटेजिक विजन आपका IT सेक्टर का है वो आप गवर्नमेंट के साथ हायर लेवल पे, मिनिस्ट्री ऑफ IT, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, FBR सारे बैठ के एक उसको विजन को सामने रखते हुए कोई ऐसे इनेबलिंग लॉज बना सकते हैं या ऐसी प्रोविजंस या ऐसी अमेंडमेंट कर सकते हैं कि जो आपको सूट करती है. बट वट एवर द टैक्स लॉज वी हैव इन हैंड नाउ, और हम रीजनल टैक्स ऑफिस में बैठे हुए वी हैव टू इम्प्लीमेंट दोज लॉज. द बेस्ट वी कैन डू इज़ टू स्मूदन दिस इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस. और उसमें जैसे मैंने कहा है कि आप अपने, हमारे फोकल पर्सन हमारे होंगे, आपके फोकल पर्सन हो जाएं. जो भी टैक्स पेयर्स जिनके केसेस ऐसे हैं कि जो स्टकअप हैं, we can improve the implementation. Thank you. Right, thank you, and I think it would be great support. Before I open the floor for the question, Sharifuddin Khilji साहब, if you can comment on the freelancer side, क्या issues आ रहे हैं actually in actual, आप क्या face कर रहे हैं जो freelancers को बिल्कुल exemption certificate मसले में बिल्कुल ही नहीं हो रहे? Khilji साहब, can you hear us? जी, can you hear me? जी जी, प्लीज. ज्यादातर तो फ्रीलांसर्स ऐसे होंगे जो स्टार्टअप की डेफिनेशन में शायद फॉल कर जाएं, और अगर वो स्टार्टअप की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेंगे तो इवन अदरवाइज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में तो वो फॉल करते ही है. कंडीशंस वही 4 हैं, ठीक है. लेकिन फ्रीलांसर्स का प्रॉब्लम ये है कि एक फ्रीलांसर के लिए शायद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना तो फिर भी ही कैन मैनेज, लेकिन फ्रीलांसर जो है अब उसके लिए जो प्रोविंशियल सेल्स टैक्स रिटर्न्स हैं, उसके साथ जो क्वार्टरली विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स हैं, इनकी रिक्वायरमेंट्स, फिर एक जो आता है वो 80% प्रोसीड्स वाले के हवाले से आता है कि ये FBR के जो कमिश्नर हैं इनको प्रूव करना है, क्योंकि फ्रीलांसर्स जो है मुख्तलिफ ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं और ऑनलाइन वेबसाइट्स के साथ उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते कि जी आपके पास कोई साइंड कॉन्ट्रैक्ट मौजूद हो, आप वो साइंड कॉन्ट्रैक्ट दिखाएं. जो कमिश्नर मांगते हैं कि जनाब आप साइंड कॉन्ट्रैक्ट दिखाएं जिसके तहत आप ये ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं. तो यानी उनकी ट्रेसेबिलिटी और के उनके जो काम की नेचर है वो IT इनेबल्ड सर्विसेज में किस तरह से आती है, उनकी ट्रैकिंग. अब फेसबुक पे अगर आप काम करते हैं तो फेसबुक पे अपने इनवॉइसिंग वगैरह सब कुछ ऑनलाइन चल रहा होता है, कोई हार्ड डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं होते. वो तो इन चीजों की जो है ना, इन चीजों की वजह से फ्रीलांसर्स जो है और वो कोई भी एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट अभी तक नहीं मिल रहा. दूसरी बात ये कि उनकी एक्सेस टू टैक्स कंसल्टेंट्स या टू द टैक्स ऑफिसर्स, उनके लिए भी एक बड़ी मुश्किल है.
ٹیکس کنسلٹنٹس بڑے شہروں میں اسلام آباد, لاہور, کراچی, ان تینوں میں پھر بھی کنسلٹنٹس اویلیبل ہیں, اور لیکن اس کے باوجود یہاں پر بھی ایگزیمپشن سرٹیفکیٹس نہیں ہیں, اور بہت سارے ہمارے فریلانسرز جو ہیں وہ چھوٹے ایریاز میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں, جیسے ایم ڈی صاحب نے بھی کہا کہ تھرپاکر, گلگت, اٹک, چہلم, یہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے ایریاز ہیں ان میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں, اینڈ دے ہیو ایبسولوٹلی نو آئیڈیا کہ بھائی وہاں پہ ایگزیمپشن سرٹیفکیٹ ان کو کیسے ملے گا. میرے پاس 2-3 کوئریز ہیں فیصل آباد کی, جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جی ایگزیمپشن سرٹیفکیٹ کے لیے چکر لگا لگا کے تھکے ہیں, لیکن ایگزیمپشن سرٹیفکیٹ افسر کی ایک میز سے دوسری میز تک فائل جا نہیں رہی کہ, اور یہ نہیں پتہ لگ رہا کہ وہ فائل ایک میز سے دوسری میز پر جائے گی کیسے. جتنی ونڈوز ہیں پہلے ڈپٹی کمشنر کے پاس جائے گی, پھر ایڈیشنل کے پاس جائے گی, پھر اس کے بعد کمشنر کے پاس جائے گی, دین اٹ ول گیٹ اپرووڈ, لیکن فائل انسپیکٹر کے پاس سے ڈپٹی کمشنر کے پاس ہی نہیں آ رہی. تو فری لانسرز کے لیے یہ بڑے ایکیوٹ پرابلمز ہیں, ڈاکومنٹیشن کے پرابلم ہیں, ایکسیس ٹو اے گڈ ٹیکس کنسلٹنٹ کے پرابلم ہیں, اور پھر ایف بی آر کے انٹرنل ہیرارکی کے پرابلمز ہیں. تو یہ اس کے ساتھ جو پھر جہاں پر جیسے میں نے ابھی سیالکوٹ والے ہم نے مثال دی, یہ ایک حسنی صاحب نے بھی کوٹ کیا تھا اس کو, کہ وہاں پر ایگزیمپشن سرٹیفکیٹ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا کہ اس سال ملنا ہی نہیں ہے, آپ کو ملنا ہی اگلے سال ہے. تو کمشنر لیول کے اوپر اگر یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کو ایگزیمپشن سرٹیفکیٹ اس سال ملنا ہی نہیں ہے, بلکہ جب آپ اگلے سال کی ریٹرن جمع کروائیں گے اس کے بعد آپ کو ایگزیمپشن سرٹیفکیٹ ملنا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ٹاپ لیول سے نیچے جو لیول ہیں ان کے اوپر ابھی انڈرسٹینڈنگ پالیسی لیول کی موجود نہیں ہے کہ ایگزیمپشن سرٹیفکیٹ یا ٹیکس کریڈٹ رجیم نے ورک کیسے کرنا ہے. اسی طرح اگر کوئی کمشنر یہ کہہ دیتا ہے کہ جناب آپ کو چونکہ آپ لوکل سروسز بھی دے رہے ہیں اس لیے میں آپ کو ایگزیمپشن ایکسپورٹ کا بھی نہیں دیتا, تو اگین there is a gap between the top level and at the commissioner level, جہاں پر یہ پالیسی لیول کی انڈرسٹینڈنگ شاید آپس میں نہیں ہے, یا یہ لا کے حوالے سے کوئی ان کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے کہ ایگزیمپشن سرٹیفکیٹ اگر ایکسپورٹ کا ہے تو 154A کے تحت مل جانا چاہیے. تو فری لانسرز اور اسٹارٹ اپ کے سر یہ مسائل ہیں. ٹاپ کے اوپر ایف بی آر کے ساتھ انٹریکشن, دین ایکسیس ٹو گڈ ٹیکس کنسلٹنٹس, اور تیسرا جو کمپلائنس اور ڈاکومنٹیشن, یہ تیسری چیز جو ہے ان کے لیے پوری کرنی ویسے بھی مشکل ہے. رائٹ, I think let's open the floor for the questions. اور پہلا سوال بھی میں کر لیتا ہوں because we are having میم عائشہ here, اور خاص طور پہ جو کیوریز ابھی خلیل صاحب نے ہائی لائٹ کی ہے. سیشن سے پہلے جب میں سجاد صاحب سے بات کر رہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جو پالیسی کے لوگ ہیں ان کے ساتھ فٹنگ یوزفل ہونی تھی, زیادہ ریسورسفل ہونی تھی. سو آئی ٹولڈ ہم کہ وی ہیڈ گڈ سیشنز فار دا پالیسی, لیکن جو آپریشنل ٹرانسلیشن ہے دیٹ ہیز بین اے گریٹ چیلنج. اور ایگزیکٹلی جو خلجی صاحب نے پوائنٹ ہائی لائٹ کیا ہے کہ پالیسی کے ٹرانسلیٹ ہونے میں اور کمشنر تک وہ بات پہنچنے میں دیر از اے گیپ. سو بینگ اے چیف کمشنر, ہاؤ یو look to this problem, and what's your solution, what's in your mind, please? Inviting us here, and first of all I would like to say that the government is very much for a public and private partnership in this particular arena, because like very rightfully said that it's going to provide us an engine of growth, because we're always making comparisons with India because it naturally comes to our mind, and we have seen that they have made so much progress just by investing in their people and just by investing in IT sector. So the government is very much aware of the importance of this sector, and let us from the very outset make it very, very clear that it's just two different ways of looking at it. The exemptions have been withdrawn, but when it has been replaced with tax credit, which is 100%, so it comes to the same thing. It's just that certain procedural requirements have been put into place, and if those can always be improved.
And the government and FPR and everybody, they're very much going to tap into this potential, and we look forward to practical suggestions on how we can improve that. For instance, I was just looking at the possible solutions that have been recommended by Ma'am Hera, and I feel that they're very good, like in terms of reducing the time. If a list of all the requirements are published somewhere or they are available on our website, probably we can suggest that to our FPR management running the FPR portal, that it would be very helpful that there are different icons for different industries, for example, for construction industry and other industries. So we can probably put in certain suggestions there, so that anybody who is going to apply for those exemption certificates, they know beforehand that what is the requirement. Because sir, like you, Usman Sahab, like you just mentioned, that there's lots of onus on the person giving the exemptions, and they just don't have those discretionary powers. You know, they're not at liberty because it's government money. It's not your own money, so you just can't be casual about it. And you have to really make sure that whatever exemption you are giving is due. So I think one way of cutting short the time would be that everybody knows what sort of documents are required. So if the application comes in complete, there are much more chances of it being timely addressed. And like Sajjad Sahab just said, that we can also fix those focal persons, and that could also ease out whatever problems you are having. And we are going to start that budget making policy negotiations very soon for the next upcoming budget. Whatever suggestions you people have and you feel that they can improve the overall working environment, we are very, very much open to all those suggestions. And there's certain measures that can be taken even at our management level. For that, we don't need to go into legislation making. Those can be taken up at the RTO levels. And in Islamabad, actually, there's a setup of 3 different sort of units. There's a regional tax office which is dealing with the individuals and AOPs. Then there's a corporate tax office which is dealing with smaller companies. And then we have the LTU Islamabad, which is dealing with really big scale companies. So it's also important that you know that which unit your case is falling into, because at times what happens is that you apply to the wrong office, and if you do that, then you lose a lot of time in transfer of cases, and maybe if that case is not relevant to that particular unit, it gets lost somewhere in transition to the relevant unit. So there are a number of issues that come to the surface when you really start looking into it. But we really want to convey that the government's focus and FPR's focus is on encouraging growth in this sector. And we are very open to any policies, recommendations that you may have. And whatever is workable, we'll try to implement that. And for the interim period, for the transitionary period, our focal persons will be available, and we'll try to expedite whatever exemption certificates are pending. Thank you. I think that's of great support. यहीं से जो आगे सॉल्यूशन हमें दोनों शहरों में मिले हैं, इंशाल्लाह यहीं से आगे हमें मज़ीद सॉल्यूशंस की तरफ ही हम जाएंगे. फ्लोर पे जो क्वेश्चंस हैं, let's give the mic here, and it's good to see couple of CFOs also sitting there. Mic मेरे ख्याल में आगे. Okay. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. मेरी रिक्वेस्ट बेसिकली आप लोगों से ये है कि हमें जिस तरह से बरकार ने कहा था ना कि यू ट्रीट अस एज गिल्टी बिफोर हैविंग टू प्रूव आवर इनोसेंस, हमें जो है वो नोटिस आ जाते हैं, हमारे खिलाफ जजमेंट्स भी पास हो जाती है कि जी आपने ये टैक्स देना है, और हम जो है वो भागते फिर रहे होते हैं. हम कहते हैं कि यार हमें पहले जो 3 नोटिस आने थे वो तो मिले नहीं, चौथा जो है वो उस पर जजमेंट आपने पास कर दिया.
There has to be a recourse on that. Appeals पे भी जो है हमारे favor में decision हो जाती है, and the letter does not get signed कि the case is over. We still have pending cases against us which have been basically decided in our favor, मगर आप लोग उस चीज़ को भी नहीं साइन करते. आप guilty करने में तो साइन करने में बड़ी जल्दी कर लेते हैं, innocence declare करने में जो है ना वो आपकी जान जाती है. ये क्यों है? Right. I think we need to be a bit polite about our questions. Your point is well taken. लेकिन मेरी गुजारिश होगी तमाम अपने जो representatives IT companies के लाहौर और कराची में हमने बड़ी balanced गुफ्तगू की. अगर कोई actual problem है तो kindly highlight that. If you think there is a solution तो वो भी propose करें. Let's be precise. हम जिस बात हम सारों के ही हैं, but we are going through a lot. Similarly, FPR colleagues are going through a lot which are not documented to us. So with that, if next question please. Assalamualaikum ji. On your Please. On your right. Okay, sure. My name is Usama Khan. I don't want to name the company because there is something I'll let you know in the past. Basically अभी जिन बातों के बारे में हम बात कर रहे थे कि आपका जो सर्टिफिकेट्स इशू नहीं होते, एंड ये बिल्कुल जेन्युइन बातें, सर्टिफिकेट्स का प्रॉब्लम है, एग्जाम्पशंस का प्रॉब्लम है, बट ऑन ये मैं आपको आई डोंट वांट टू नेम एनीवन, बट मैम बड़ी हमारे लिए रिस्पेक्टफुल हैं. जी एफबीआर के सामने कोई भी नाम नहीं लेता, ये हमें 2 सेशंस में आइडिया हो गया. सही कर रहे हैं. तो पॉइंट ये है कि अभी आपने एक लिस्ट बताई थी मैम हिरा ने कि ये हम लोगों की लिस्ट है फॉर एग्जाम्पशन, और ट्रस्ट मी हमारे कंसल्टेंट के पास उनमें से सिर्फ एक डॉक्यूमेंट मौजूद था, और हम लोगों को तकरीबन 2-3 महीने हो चुके हैं, एग्जाम्पशन मिल चुकी हुई है. उन सारे डॉक्यूमेंट्स में से एक भी डॉक्यूमेंट हम लोगों ने नहीं प्रोवाइड किया. आई एम वेरी ओपन एंड वेरी ब्लंट अबाउट इट. एक कंसल्टेंट के पास सवाए ऑडिटेड रिपोर्ट के कुछ भी नहीं था, बट ही हैज़ हिज कनेक्शंस इन द एफबीआर, और हम लोगों को वो चीज़ें मिल गई थी. नंबर 2 इज़ मैम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और सर ने अभी जो मुझसे पिछला जिन्होंने क्वेश्चन किया था, ये बिल्कुल इमोशनल होकर नहीं कह रहे, आप हमारे इमोशंस को अंडरस्टैंड कीजिएगा. बेसिकली हम लोगों के लिए अब यकीन माने कि एफबीआर के ऑफिस में जाना, पुलिस स्टेशन जाना बहुत इजी है, बड़ा कंफर्टेबल होता है. एफबीआर के ऑफिस में जाना यकीन माने कि अभी मुझे कल जो हम लोग के नोटिस आया हुआ था उसका जो जवाब है उन्होंने एनालिट कर दिया सारी चीज़ों को, तो वो कल मिला है, 6 महीने बाद हम लोगों को मिल रहा है. तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, नो लेजिस्लेशन इज़ रिक्वायर्ड. मैम से सिर्फ ये रिक्वेस्ट है, बड़ी हम्बली, बड़ा रिस्पेक्टफुली, कि आप सिर्फ अपने स्टाफ को थोड़ा सा इतना एक इंस्ट्रक्शंस दे दीजिए कि थोड़ी सी जो एक नया बंदा आ रहा है या किसी भी कंपनी से आ रहा है तो वो कोई गिल्टी नहीं है, वो कोई इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए आ रहा है. जो 1 विंडो ऑपरेशन का हमारे पास एक ड्रीम है, उसके हवाले से अपने स्टाफ को सिर्फ इतना गाइड कर दें कि थोड़ा सा कोऑपरेटिव हो जाएं, हम लोगों को चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग दे दें. मतलब बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो इंटरनली, हम लोग तो प्राइवेट सेक्टर हैं, हम लोग तो इंटरनली अपनी जो बुक कीपिंग है और इस तरह की चीज़ों को नोट कर रहे होते हैं. हम लोग गवर्नमेंट से डील करना हम लोग के लिए एक बड़ा चैलेंज बन जाता है, तो उस चीज़ को सा अगर आप देख लें. और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू PSP कि उन्होंने इस वक्त, मैम तो डेफिनेटली बहुत रिस्पेक्टफुल हैं हमारे लिए, बट FBR के किसी रिप्रेजेंटेटिव को हमारे सामने हम उनसे बात कर सकते हैं. हमें इस काबिल PSCB ने बनाया कि हम बात कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स अ ड्रीम टू टॉक टू देम. दे नेवर रिस्पॉन्ड, दे नेवर कोऑपरेट. सॉरी टू से, बट दे नेवर कोऑपरेट. Right, I think we got couple of comments. Question मुझे अभी तक एक ईज के ऊपर आया है. Let's collect 2-3 questions. Please give a mic to the lady as well. Hira as well and then lady as well. काफी देर से हाथ खड़ा किया हुआ है. जी इजाज़त है मुझे. हाँ sure, sorry. He has been standing as well. अच्छा, ज़िशान कमर नाम है मेरा. 2 क्वेश्चन से या कमेंट से ये अंदाज़ा हो गया कि ये कितनी सिसकती, बिलकती, तड़पती इंडस्ट्री है IT, जो कि पाकिस्तान में इनकलाब बर्पा कर सकती थी. मैं बरकान की बात और सिर्फ उस्मान साहब की बात को सेकंड करूंगा. मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है. मेरा क्वेश्चन एक है, आखिर में करूंगा. हमारा एग्जाम्पशन रिजेक्ट हो गया है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूँ PSCB के साथियों से. बरकान ने बहुत अच्छा कहा कि सिंगल विंडो 101 सिंगल विंडो हो चुकी हैं, और वो मुझे याद आ गया इस पर कि मैं आई एम सॉरी, मैं 1 मिनट लूँगा सिर्फ आप लोगों का. वो 80 की दिहाई में 50-50 आता था, तो उसमें एक क्लिप था कि वो किसी सरकारी दफ्तर में जब जाता है तो उसको कहता है तुम बे फॉर्म लेकर आओ. तो वो बे फॉर्म लेके जाता है, तो वो कहता है कि जी ये बे फॉर्म है. वो कहता है बे फॉर्म के साथ तुम्हें अब F फॉर्म भी लगाना है. एंड देन इट कीप्स ऑन
ड्रैगिंग एंड ड्रैगिंग एंड ड्रैगिंग, और उसके बाद वो दिखाते हैं बूढ़ा हो जाता है, और जब वो बूढ़ा होता है तो वो कहता है कि सर आज तो मैं सारे फॉर्म लेकर आया हूँ। तो वो जो बाबू होता है वो हंसता है, कहता है रह गए ना, इसमें जी फॉर्म नहीं लगा हुआ। तो वो कहता है वो जी फॉर्म क्या होता है? कहता है वो जी फॉर्म होता है जिसमें ये लिखा होता है कि इस एप्लीकेशन के साथ फॉर्म कितने लगे हुए। तो दिस इज द डायलेमा वी आर फेसिंग एज एन इंडस्ट्री। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इंडिया और एशियन कंट्रीज के साथ हमारा कंपैरिजन है, और उस्मान साहब ने बड़ी अच्छी बात की आयरलैंड की। मैं आई एम हेयर टू वाउच द फैक्ट वी हैव 2 कंपनीज इन डबलिन, और अभी हमने रिसेंटली 2021 में अपना एक नया इनिशिएटिव साइबर सिक्योरिटी का डबलिन में रजिस्टर किया। रीजन ये कि इट टुक अस 5 months टू रजिस्टर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन SSCP, and it took us 2 days to operationalize that company in Dublin. तो उस्मान साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा था। अब मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ करेक्टिव एक्शंस की बात कर रहे हैं। करेक्टिव एक्शन ये है कि हम सुबह उठे थे, हमें पता चला कि एग्जाम्पशन खत्म हो गई। प्रिवेंटिव एक्शन क्या है? अगर हमने $150 बिलियन के कंपटीशन के साथ लड़ना है $2 बिलियन पे बैठ के, तो क्या हम इसको स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस देकर क्या हम इसको प्रिवेंटिवली खत्म नहीं कर सकते? कब तक ये कमाऊ पूत जो कमा के पैसे लाता है और जो बाकी बच्चे जो पैसे कमा नहीं रहे हैं उनका बोझ भी ये उठाता रहेगा? तो इट इज वेरी इजी टू स्लैप अस विद द टैक्स, लेकिन आई थिंक इट्स वेरी हार्ड टू मेक अ पॉलिसी जिसमें हम प्रिवेंटिवली इस सेक्टर को रिबेट्स दें, हम इसकी विद होल्डिंग्स को, इसकी परचेजिंग को, इसके आईटी इंडस्ट्रियल टैरिफ्स को, वी आर स्ट्रगलिंग फॉर द लास्ट 3 years टू गेट द इंडस्ट्रियल टैरिफ फॉर आवर ऑफिस। वी हैव आवर ओन बिल्डिंग, लेकिन हमें कहीं से भी हम वापडा जाते हैं, हम right, but this is because for SPR we do understand and the point well taken. Your question is more around and your comment is more around policy related thing. We are here to discuss about operational. मेरा तो सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि आज एग्जाम्पशन खत्म हो गई है, एग्जाम्पशन के लिए जो लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की, जैसे कि इन्होंने कहा अभी वो फाइनल हो जाएगी, ठीक है, तो वो लिस्ट हम कंप्लीट करते हैं तो भी हमारा एग्जाम्पशन रिजेक्ट हो चुका है। तो अभी कल अगर कोई नई चीज एज अ पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाएगी तो विल बी सिटिंग हियर अगेन and we will be discussing कि जी हमने उसको fulfill कैसे करना है। I'm just trying to understand that this is my particular question from PSCB कि as a government institute, क्योंकि FBR को तो जो भी पॉलिसी मिलेगी टैक्स चार्ज करने के लिए वो तो हमें नोटिस भेजेंगे। PSCB MOIT जो है वो ऑन अ पॉलिसी फ्रंट वो क्या कर रहा है जिससे ये इंश्योर हो सके कि दिस सेक्टर इज अ स्ट्रेटेजिकल सेक्टर। थैंक यू। Burkar would like to respond on that question. इसमें सिर्फ मैं एक बात करूंगा कि वी हैव ऑलमोस्ट 3-4 साल से तो मैं भी पॉलिसी में हूँ, पाशा का 20 साल का एक्सपीरियंस है पॉलिसी में, उस्मान भी पहले ऑस्ट्रेलिया में एक अच्छी खासी जॉब कर रहा था, बेचारा यहाँ पे आ गया पाकिस्तान में। तो पॉलिसी हमने देखा है इज अ वेरी डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर। पॉलिसी में आप लिख देते हैं चीज़ें, उस टाइम पे आपको सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, उसके बाद जो टैक्स कंसल्टेंट उसमें से लॉजिक निकाल के लाता है, जो कमिश्नर उसमें से लॉजिक निकाल के आता है, दैट्स ऑलवेज a surprise to me as well and probably sure के surprise to the FBR people sitting here as well कि पॉलिसी आप जितनी मर्जी अच्छी बना लें, अब पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिट रिजीम को देखें, बड़ी मासूम सी रिजीम लगती है कि जी कोई मसला नहीं है, आप ये टैक्स फाइनल लॉ में लिखा हुआ है 3 डॉक्यूमेंट सबमिट कराएंगे, 3 डॉक्यूमेंट आप सबमिट कराएंगे, आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। बट जब वो चीज़ इम्प्लीमेंटेशन में जाएगी, उसकी पॉलिसी की अंडरस्टैंडिंग क्या है, उस बंदे के क्या सर्कमस्टेंसेस हैं, वो इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे देख रहा है कि मैं ये गलत ना कर दूं, या इसको एज एन अपॉर्चुनिटी की तरफ देख रहा है टू मेक सम मनी एज वेल ऑन द साइड विच हैज हैपेंड एज वेल इन सम टैक्स ऑफिसेज, तो दैट चेंजेस द गेम ऑल टुगेदर। सो पॉलिसी में देयर इज ओनली मच यू कैन डू, बट व्हेनेवर यू गो टू इम्प्लीमेंटेशन इट्स अ डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। राइट, ओके, इन्होंने काफ़ी देर से हाथ खड़ा किया है, if you could be for a minute with me please. अच्छा, मैं एक चीज़ ऐड कर दूं, जैसे मैंने पहले भी कहा था, जब आपको इश्यूज आते हैं प्लीज़ डू शेयर इमीडिएटली विद अस एंड विद पाशा, PSCB पाशा से शेयर करें ताकि हम उन चीज़ों को आगे हाईलाइट कर सकें, करेक्टिव मेजर्स हो सकें।
تو پالیسی کے لحاظ سے جیسے برکان نے کہا, ہم کیش ریوارڈ انسینٹیو 2018 کی پالیسی میں ہم نے انکلوڈ کیا تھا, اینڈ اٹ ہیز ٹیکن اس سیورل ایئرس, اور اب ماشاءاللہ ہم 12 جنوری کو اس کا سیشن کر رہے ہیں, دیٹ از بینگ لانچ ناؤ. تو پالیسی وائز بھی کام چل رہا ہے, منسٹری آف آئی ٹی میں بھی پی ایس سی بی سپورٹ کر رہا ہے, پاشا سپورٹ کر رہا ہے, اور باقی اداروں میں بھی پالیسی ورک چلتا ہے. اس پالیسی ورک کے ساتھ کنسسٹنٹلی پروسیس کو آگے چلانا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. لیکن آج ہم ٹیکس میٹرز پہ کر رہے ہیں, تو اٹ از ویری امپورٹنٹ, جب آپ کا ریجیکٹ ہوا ہے پلیز ڈو شیئر ایٹ دیٹ ٹائم, تاکہ اسی وقت اس کا کوئی ہائی لائٹ کیا جائے, اس کو ریزالو کرایا جائے. تھینک یو. Thank you, PSAP, Pasha Group and FBR for having this informative seminar. My question is from Ms. Aisha. Since one of the major requirements for obtaining the tax exemption certificate is being registered with the sales tax authorities and filing the respective sales tax returns, and so as we all know that export sales they fall under 5th schedule as zero-rated sales. And as per Section 10 of the Sales Tax Act, we can claim excess input tax refund on export sales. But on the contrary, a clause has been added as M under Section 8 of Sales Tax Act, which actually does not allow input tax refund on export sales. Since one of the major reasons is that our international customer is unregistered in Pakistan, so I just wonder that how can an international customer would be registered in Pakistan? So this is something like I just do not get one idea that if we are being registered with the sales tax authorities, what is the benefit for the IT companies in it? We cannot claim our refund, we cannot do anything. On the contrary, we have to fulfill the withholding responsibilities at being withholding agent. So this is one of the reasons that I would like to request, if something, any change in the policy or law should happen, that would at least, like if it cannot be absolved, the sales tax registration requirement, at least we would be allowed to get sales tax refund adjustment. So now whenever I file the sales tax return of my respective companies, I'm not getting any benefit. Even if I have got sales tax refund, I cannot claim it because my international customer is not registered in Pakistan. So I cannot ask my international customer to be registered in Pakistan. Like, why would it be registered in Pakistan? I just do not get this idea. Like, either I think it should be like that, okay, there is no sales tax refund on export sales, or it shouldn't be in the Section 8 of the Sales Tax Act. So I would really like you to, bring some light in this provision, like why there is a contradiction in the Act. So, thank you. I think the basic reason is documentation of the economy, and if you are not it's not for people who are making exports only, because at times those houses, those IT houses, they are engaged in both local sales and also in exports. So the purpose is to bring everything under documentation. It's not for benefiting anybody as such. The purpose is documentation. And the reason why, one of the reasons why the exemptions were withdrawn, like you have been reading everywhere in newspapers and everything, that it was under IMF's demands that all sorts of exemptions should be withdrawn. So that was the reason that exemptions were withdrawn, and they were replaced with tax credits, which is basically one and the same thing, but it's just a different name for it, because we just can't keep on giving exemptions. Likewise, the purpose of filing the sales tax returns is just to increase documentation of the economy. And it's not for giving any, nobody files the returns for any benefit or just for claiming input tax adjustment. It's basically to increase the documentation. But in case you're having certain problems and there's certain specific queries, we are always there, and we can take up different cases because they're slightly, every case is different from the other. And if you're facing certain problems in filing the returns or certain other things, then those people are available to guide you along. All right, Hira.
So सबसे पहले thank you for your positive words and your cooperation. 3 सवाल आते हैं. पहला, लॉ में था कि 3 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है in order to get the exemption certificate. I know कि प्रैक्टिस में 4 डॉक्यूमेंट्स हो गए, चूंकि उसकी रीजन भी मुझे अंदाजा है. Can you just clarify for the sake of the audience के कौन से वो की डॉक्यूमेंट्स हैं जो अभी आपकी टीम रिक्वायर करती है in order to grant the exemption certificate? वो जो 4 डॉक्यूमेंट्स हैं, आई एम अज्यूमिंग कि आप वही फॉलो कर रहे होंगे. इफ़ यू कैन रिपीट दोज. सेकेंड सवाल ये है कि इस वक्त जो नॉर्थ रीजन में आपके पास जितने एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट्स आ रहे हैं, वो केसेस, एवरेज टाइम आपके पास कितना लग रहा है उनको क्लोज होने में या सर्टिफिकेट अवॉर्ड होने में? तीसरा सवाल, there are some companies which are being given certificate for 6 months or for 3 months. Is there a criteria on which you do not grant the annual certificate and do it for 6 months or 3 months? And if you can share that criteria. Since there are too many questions, so I'll just start answering whatever I remember. Basically, there's no set time frame for issuance of exemption certificates. It can be for a year at the maximum, but we do issue quarterly exemption certificates as well. The purpose is that if you feel that after a quarter certain things have changed, you have got to know about certain information which wasn't available earlier, because basically the system of taxation is against exemption, because we just want to not to exempt any income which is taxable. So the reason why some of the people would resort to just quarterly exemption certificates is precisely to keep on checking that if something adverse has got to their knowledge, then they resort to that. But that's not a set practice. Anything is good enough. But probably if it's a new startup and there are not going to be many changes, it can be issued for a longer duration of time. And it also depends on if lots of companies are being very compliant and tax compliant in the sense that they are regularly filing their withholding statements and they are abiding by all the legal requirements, then it creates a sort of trust between the tax collectors and the taxpayers. So I think we have to, instead of blaming each other, it would be better that we create an environment where both the taxpayers and the tax collectors can trust each other and they can together work for getting the benefits that are expected out of them. And mostly, like you said, that the requirements for filing these exemption certificates is basically your withholding statements and your returns and the proof that whatever your sort of contracts that you are entering into. Right. जो 3 सवाल आते हैं ना हीरा के, और एंड द लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन वी कैन सी हियर इन द रूम, और बरकान ने कुछ हद तक उसे कवर करने की कोशिश की है. इट लुक्स लाइक द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद द कमिश्नर 1 चेंजेस व्हेन इट गोज टू कमिश्नर 2. सो इफ यू कैन स्टैंडर्डाइज, और जो कि हमने अपने फाइनेंस बिल के अंदर भी उसे ओवरकम करने की कोशिश की थी. अच्छा, पॉलिसी में वो एक्सेप्ट हो गया है. सर बैक टू योर पॉइंट कि पॉलिसी के अंदर जो भी हम करा सकते थे, एंड समवन आस्क्ड कि मिनिस्ट्री ने क्या किया, वी एक्चुअली वेंट टू द चीफ IR ऑफिस. हम उधर मेंबर पॉलिसी के साथ अलग बैठे, उन्होंने चीफ के पास भेजा, उनके पास बैठ के हमने आधा दिन लगा के वो डॉक्यूमेंट अमेंड किया, और उसमें हमने वो ऑपरेशनल चीज़ें मिटिगेट की विच वी कैन फोर्सी. और जिस तरह पहले सबने कवर किया कि हमें नजर आ रहा था, व्हेन यू आर चेंजिंग अ रेजिम इट विल इम्पैक्ट एंड इट विल गो डाउन टू द अथॉरिटी ऑफ द कमिश्नर. ये हमने फ्लैग किया हुआ था, हमने उसको पॉलिसी लेवल पे कर लिया. जो ट्रांसलेशन हो रही है नीचे टूवर्ड्स कमिश्नर, हाउ कैन you ensure and what's the way forward you can suggest rest of the field officers sitting in the Sialkot, किसी ने फैसलाबाद के मसले की बात की, उधर भी वो एग्जाम्पल सेट हो के if we can resolve it magically way somehow. I think you have pointed out a problem which is faced by all the people across Pakistan. So if you have got an agreement on that, the list of documents and everything, so what we can do is that internally we can share it with our officers, that these are the minimum documents that are required.
and so that there's uniformity across all the commissioners. So that is something that's doable and nothing that is contentious. So, you know, that's what I'm saying, that instead of starting from an atmosphere of suspicion and mistrust, just come across when we are offering that, you know, we are willing to have focal points. The precise premise of all that was that, you know, if you have certain problems and you are facing certain restrictions, do come forward and let us know, and we'll try to minimize whatever we can. And then there are certain things that we cannot promise on, and those are the legal requirements. We can't waive them off. So they will definitely be there. But whatever we can do in terms of facilitating, we are definitely there. I think that internal restriction would also helpful कि कम से कम अगर इंटरनल सर्कुलेशन हो जाती है, बेशक सिर्फ आपके रीजन की हद तक, और हर कंसल्टेंट के पास भी हम भी सर्कुलेट कर सकते हैं जो टैक्स कंसल्टेंट है कि हमें इंटरनल सर्कुलेट में ये है. वी गॉट 2 questions, one at that table for long, then कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं आईटी का विद अदर इंडस्ट्रीज, लेकिन हमें पीसेप से कोई सपोर्ट नहीं है. मींस कि हम सोचते हैं कि पीसेप ये काम कर रहा है, पीसेप ही करेगा. जब प्राइवेट कंपनीज कर रही हैं ये काम, तो उसमें पीसेप क्यों नहीं सपोर्ट करता? मींस कि अभी रिसेंटली हमने 29 दिसंबर को एक वर्कशॉप करवाई है डिजिटल एग्जिस्टेंस और डिजिटल ट्रेनिंग पे. तो पीसेप से मैंने बहुत सी दफा रिक्वेस्ट की, प्रपोजल भेजा, इवन दो कि उन्होंने रिस्पांस भी नहीं किया. ये एक इनिशिएटिव, पार्टिसिपेशन इज नॉट द सपोर्ट. कोई बिजनेस कंडक्ट करने में अगर कोई इशू हो रहा है, नहीं नो सर, इट्स नॉट अबाउट बिजनेस. मैंने उनसे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मांगी, लेकिन जो दूसरी इंडस्ट्री के लोग हैं ना, तो वो आईटी की प्रेजेंस को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं. जब पीसेप का नाम आता है तो वो यूथ के लिए एक ट्रेनिंग थी, तो उसमें अगर पीसेप देता कि मतलब आप एक ट्रेनिंग करवा रहे हैं डिजिटलाइजेशन पे, तो उसमें जो हम आईटी को करते हैं, हम जो कर रहे हैं आईटी का कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं विद अदर इंडस्ट्रीज. आई थिंक डिजिटलाइजेशन थी तो नेशनल आईटी बोर्ड का मैंडेट था या बताया जाता, बट स्पॉन्सर यू वांट टू रिस्पोंड इट. नो सर, इट्स नॉट अबाउट द स्पॉन्सरशिप. मैं आपको वही बात नहीं, मैं मैंडेट की भी बात कर रहा हूँ. वी गॉट लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑलवेज, बट उस्मान वुड लाइक टू रिस्पोंड ताकि हम, जैसे ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, एक आपने एक वर्कशॉप करवाई है जिसमें हम टैक्स के रिलेटेड सारी चीजें, दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग फॉर लास्ट 12 months, क्योंकि पैसे नहीं थे, पैसे आ गए तो दूसरे काम कर लिए. स्पॉन्सर प्लीज. अच्छा नहीं, ये हो सकता है ये हमसे जेन्युइनली रह गया हो और आपने वाकई बहुत कोशिश की हो, आपने मुझे भी रीच करने की कोशिश की हो. आई अज्यूम मेरे पास 28 प्रोजेक्ट हैं, और वो 28 प्रोजेक्ट जो है ना, हर चीज़ ऐसी है कि जो आज सुबह होनी है, तो हमसे भी गलती होती होगी, और आई अज्यूम हमसे गलती हो गई होगी. नाउ हैविंग सेड दिस, जब मैं आप लोगों के साथ वहाँ बैठा हुआ होता था तो मेरे लिए ये बात कहनी बड़ी आसान होती थी. जब मैं यहाँ पे आया, मैंने कहा ये क्या मतलब है, क्यों सपोर्ट नहीं कर सकते? वाई कांट दे जस्ट गिव अस देयर लोगो एंड यू नो एंड जस्ट पुट आउट अ न्यूज़लेटर? पता नहीं, अजीब लोग हैं, सुनते ही नहीं है. बट रियलाइजेशन ये हुई कि अ लॉट ऑफ टाइम्स बहुत सी कुछ अननोन ऑर्गेनाइजेशंस जिनके कोई और वो पेडिग्री नहीं है, जिसके मकासद कुछ और हैं, वो गवर्नमेंट की किसी डिपार्टमेंट का लोगो यूज़ करना चाहते हैं. सो कभी कभी ऐसा होता है कि व्हेन सच रिक्वेस्ट कम्स टू अस, हम और हमारे नज़र से आ जाती है, तो हम कभी कभी उसके ऊपर हम देख लेते हैं कि जी कौन है, लोग क्या हैं, बैकग्राउंड क्या है, इससे पहले कितना काम किया हुआ है, इससे पहले कोई इवेंट किया है या नहीं किया हुआ, कोई साथ में कोई प्रेजेंटेशन है. ये तमाम चीज़ें हमें भी देखनी पड़ती हैं, वरना इस तरह की बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त एज ऑन टुडे इस वक्त हैं जो आपको बता के आई हैं कि उस्मान साहब ने कह दिया, मुझे बता के आई हैं कि आपने कह दिया है, एंड दे आर टेकिंग एडवांटेज. तो थोड़ा सा वी हैव टू बी अ बिट केयरफुल इन दोज टर्म्स कि गवर्नमेंट का कोई लोगो किसी जगह पे इस्तेमाल होता है और खुदा न खास्ता वहाँ पे कोई गलत प्रोमिस कर लिए जाते हैं लोगों से, तो वो हमारे ऊपर बाइंडिंग हो जाता है. तो वी हैव टू बी बिट केयरफुल ऑन दैट टर्म्स. That's probably the only reason. Right. I think let's come to the text question. With that, thank you, sponsor, for the explanation, sir. You have a question? आप सबको अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मैं 9 ईयर बाद पाकिस्तान आया. मैं ये सोच के आया था कि एयरपोर्ट पे मुझे 10 कंपनी पकड़ के जॉब के लिए ले जाएंगी. खैर ऐसा वहाँ पे नहीं हुआ.
फिर कुछ 3-4 महीने घूमता रहा तो मैंने कहा यार कंपनी खोल लेते हैं, क्योंकि मैंने ग्लोबली ये देख के कि वहाँ पे हम लोग इंडियन कंपनीज़ को, मैं अमेरिकन कंपनीज़ में काम करता था तो हमने बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स $1 मिलियन के, तो हम दूसरी कंपनी को हम खुद देते थे। तो मैंने कहा क्यों ना पाकिस्तान में एक ऐसी कंपनी खोली जाए जिसमें हम बजाय कि बाहर के दूसरी कंपनीज़ को दे दें। तो मैंने पार्टनरशिप की ग्लोबल बहुत सारे इदारों के साथ, और मैंने अपनी कंपनी खोलना ज़रूरी समझा पाकिस्तान के अंदर, और सारा रेवेन्यू पाकिस्तान में आ जाए। और ये मैंने गिलगित में जाके अपने आबाई गांव में वहाँ पे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करूँ। तो जज्बा सबका यही है कि हम सब पाकिस्तान के लिए काम करें और यहाँ पे डॉलर आ जाएं, और $1 मिलियन हमारा कोर बैंकिंग सिस्टम या दूसरे सिस्टम की मद में बाहर जा रहे हैं। हर बैंक, छोटा सा NGO भी कोर बैंकिंग खरीद रहा अमेरिका से या दूसरे इदारों से, जिसका $1 मिलियन और $1 बिलियन हमारा जो है वो बाकी बाहर बेच जाए। तो हम ये बचाने की कोशिश करें और हमारी कोर बैंकिंग कंपनी है। अच्छा, अब आते हैं एक इशू में गिलगित में हम सबको मुबारकबाद कि 31 कंपनीज रजिस्टर्ड हुई हैं, और वहाँ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी, और मैं खुद गिलगित से हूँ, बड़ी खुशी की बात है। एक इशू FBR से है, वो ये है कि गिलगित एक अजम्प्ट है, टैक्स अजम्प्ट एरिया है, और एक रात को मैं जब आता हूँ तो मुझे एक मैसेज आता है FBR से कि भाई आप 40,000 को आपके ऊपर पेनल्टी लगी है, टैक्स रिटर्न जमा नहीं करना कुछ। तो जब मैं ये सोच के मुझे आइडिया नहीं था कि गिलगित टैक्स अजम्प्ट एरिया है, और मैंने कमाया कुछ नहीं है, एक दुकान बेच के कंपनी खोली है। तो अभी क्योंकि कमाने का वक्त स्टार्ट नहीं हुआ था तो मुझे 40,000 की पेनल्टी लग गई, और वो एक ही दिन की नोटिस मुझे दिया गया, और मेरे मैसेजेस यहाँ पे हैं, बार बार आ रहे हैं, मुझे डरा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कंपनी बंद करनी पड़ेगी। शुक्रिया। I think that's a particular case. We can look into it. जो हीरा compile करेंगे, we will be adding that to that list. Other question, tax related please. इधर सामने भी एक माइक दीजिएगा अगर है तो। मेरा क्वेश्चन है, मेरा नाम है वसीम अब्बास, मेरा मैम से क्वेश्चन है। रिसेंटली वी गॉट रिजेक्शन ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन एप्लीकेशन, और उसमें रीज़न जस्ट सोल ये दिया गया कि आप एलिजिबल नहीं हैं इस टैक्स ईयर के लिए, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वी हैव सबमिटेड आवर लास्ट टैक्स रिटर्न विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट्स एंड आवर लास्ट ईयर PRCs। तो मैम से मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि मतलब एग्जामिशन देने के लिए कमिश्नर को किस साल की रिटर्न्स को देखना ज़रूरी है, इधर प्रेजेंट टैक्स ईयर जिसकी वो एग्जामिशन दे रहा है या प्रीसीडिंग टैक्स ईयर्स की? Because they had asked us that you go to the policy wing and take direction from them that what we need to ascertain while giving exemption certificate. आपको जी रिटर्न प्रीवियस ईयर की रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि एक साल गुजर जाता है तो जून तक आप पिछले साल की, पिछले फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न फाइल करते हैं। सो व्हेनेवर यू आर फाइलिंग फॉर योर डॉक्यूमेंट्स तो यू प्रोवाइड द प्रीवियस ईयर्स रिटर्न, or they might ask for certain documents like your bank statement or anything else which they want, but that would be for the current period. Okay, thank you. अस्सलाम वालेकुम जी, सलमान। मेरी रिकमेंडेशन है एक, हमारी डॉक्टर वकार के साथ जिस वक्त टैक्स का एग्जाम्पशन का इशू चल रहा था तो डिस्कशन हुई थी, एंड ही गेव अ सजेशन कि जी आप हमारे जो टैक्स कमिश्नर हैं और इंस्पेक्टर्स हैं, स्पेशली इंस्पेक्टर्स को अवेयरनेस सेशन करवा दें। वो अभी तक नहीं हुआ कहीं पे भी। बाकी जगहों को तो हम कवर नहीं कर सकते, पर इस्लामाबाद RTO और CTO के अंदर जो टैक्स इंस्पेक्टर्स हमारी कंपनीज के साथ डील कर रहे हैं, इफ़ यू कैन हाफ एन आवर 45 मिनट्स अवेयरनेस सेशन फॉर देम, ताकि उनको पता हो कि टैक्स कंपनियाँ, IT कंपनियाँ क्या कर रही हैं, उनके लिए क्या चीज़ें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू एन एग्जाम्पल, इट्स माई केस, स्टार्टअप था मेरा, उसमें एज अ स्टार्टअप इट वॉज एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स, और उसमें लॉ में लिखा हुआ है कि जी इट इज़ कैपिटल प्रॉफिट एंड गेन्स, और उसको जिस इंस्पेक्शन ने रिजेक्ट किया उसने उसका लिखा कि जी लॉ में लिखा हुआ है कि प्रॉफिट ऑन गेन्स, तो दिस इज नॉट इनकम, सो इनकम इज नॉट एग्जेम्प्टेड। आई हैव अ रिटन प्रूफ ऑफ दैट, बट इट्स नॉट लाइक कि जी वो अल्टीमेटली कमिश्नर ने हमारे अपील में हमारे हक में फैसला हो गया, बट द थिंग इज कि वो अवेयरनेस जो है, इफ़ वी कैन सेट अप ए टाइम जिसमें हम लोग PSC भी मिलके एक छोटा सा हाफ एन आवर का 45 मिनट्स का चाहे वर्चुअल सेशन हो, उनको अवेयरनेस दे सकें, तो दैट माइट बी रियली गुड। उसमें बहुत सारे मसले जो ऑपरेशनल लेवल के हैं दैट विल बी सॉल्व्ड। I think it's a useful suggestions and will definitely look into. हाँ जी, बस इसमें सलमान की बात में सिर्फ ऐड करूँगा कि अगेन बिकॉज द IT सेक्टर इज़ रिलेटिवली
different sector. Tax commissioners के behalf पे captive office का concept समझना कि जी there is a international company and just opening an office in Pakistan for hiring, outsourcing a particular department, and then even questions कि जी why they are not bringing profits, because that's how captive offices generally work. Even one of our top exporting companies had a remark from the commissioner that you don't have IT and IT enabled service written on your website. So that was very humiliating for that company, because it is one of the top 3 exporting companies of Pakistan, to their management actually. So I think these sessions are very, very important. So we give an idea okay, what is a call center industry, what is an IT enabled service, what is पाकिस्तान में different kind of services की industry क्या है, startups क्या हैं, ताकि एक general understanding हो जाए. I think it will be very, very beneficial for FBR as well as us. I think we'll really tie up with you, and in this context we'll need certain assistance from your end as well, because you can come up with different terminologies and the different areas where you feel that you are being misunderstood. Big public gathering, if you can have closed groups, nomination from the IT companies, PSCB and Pasha can facilitate that, handhold that, जहाँ बैठ के हम commissioners को भी बता सकें कि architectures हैं MNCs के, new companies के क्या हैं, emerging companies के क्या हैं, और अगर especially for the policy side, क्योंकि मिनिस्ट्री में बैठ के अगर मैं देख रहा हूँ, हमारे लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि आप लोगों का व्यू भी हमारे पास हो कि अगर एक्सप्लॉयटेशन किसी जगह पे हो रही है, हम किस तरह पॉलिसी में इंश्योर करेंगे एक्सप्लॉयटेशन आइंदा ना हो. तो आई थिंक द क्लोज वर्किंग डिस्कशन इज वेरी मच नेसेसरी देयर. राइट, विद दैट नेक्स्ट क्वेश्चन द लेडी इन द मिडल. अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरे पास ऑपरेशन लेवल के 2 क्वेश्चंस हैं. जो एग्जामिशन सर्टिफिकेट है सेक्शन 154A का, ये लास्ट टाइम अगस्त 21 में हमें फॉर्म अवेलेबल हुआ था. तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि शायद 1 जनवरी से अब ये नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अभी तक हम जनवरी टू जून के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे उसके ऊपर. एरर आ जाता है जब भी हम उस पर अप्लाई करते हैं. और सेकंड इशू मैम ये है कि जो हमारी IT सर्विसेज की एक्सपोर्ट है, सेल टैक्स रिटर्न में कोई प्रॉपर जगह नहीं है जहाँ पे वो हम लोग डिक्लेयर कर सकें, क्योंकि जो गुड्स की एक्सपोर्ट है वो तो NXT-D में चली जाती है गुड्स डिक्लेरेशन फॉर्म के थ्रू, लेकिन सर्विसेज में ये इशू है कि कोई प्रॉपर प्लेस नहीं है. करंटली 2 प्रैक्टिसेस चल रही हैं, या तो लोग डिक्लेयर ही नहीं करते या फिर लोकल सेल्स में डिक्लेयर करते हैं. अगर हम लोकल में डिक्लेयर करते हैं तो फिर उसके भी नोटिस आ जाते हैं कि लोकल अगर आपकी सेल हुई है तो उस पर टैक्स पे करें. बस मैम ये 2 पॉइंट्स हैं. थैंक यू. ये काइंडली आप आइदर डायरेक्टली हमारे ऑफिस में just send us a letter saying that these are the 2 issues you are facing, because जैसे जैसे नई लीगल चेंजेस आती हैं तो देर at times ये होता है कि वो they're not incorporated, all sorts of situations are not incorporated in the returns. So if you're facing this problem, do send us a letter. I've also made note of it, and we can take it up with our IT, FBR IT team, so that the issue is resolved. Right, ma'am, please. Assalamu alaikum. Actually, my first question is from Mr. Usman Nasir. He told that tax is a good tool for generating the revenue. So if a tax is a good tool for generating the revenue, so why the IT industry is specifically chosen? Even we know that there are rest of the industries and they are taking and collecting the taxes. So why because if we just look at the IT industries, so they are the major source in the development of Pakistan. So why we are creating those obstacles of imposing the taxes, withholding statements, you have to file this, that. So my first question is from Mr. Usman Nasir. Don't you think so that this would be discourage freelancers who, like we are just looking around that this unemployment situation in the Pakistan, they are just getting the small amount, the stipulated amount from their services. And we are now applying the taxes on those persons and those peoples as well. And we are also discouraging the investors as well.
So this is my first question. Second question, that there are lots of amendments in the compliances. Like first we were supposed to, that we have to get the tax exemption certificate till 2025. Now there is amendments, lots of that you have to, the amendments would be in the middle of the fiscal year. Second question is that, what about the sales tax return? If you are not providing the services locally and domestically, so why we are supposed to file the sales tax return? Second thing, that 1% withholding tax, that bank are deducting 1% withholding tax from us. Instead of the fact that 6 and 65, all the compliances and requirements, we are fulfilling the criteria. Fifth question is that what about the tax exemption certificate, that the list of the documents are to be provided. That yes, you have to provide the PSCB certificate, PRCs, and then next day we are known about that you have to fill those documents as well. Thank you. आखिरी दफ़ा इतने सवालात मेरे पास आए थे तो मैं बहुत बुरी तरह फेल हो गया था. So, tax is a great tool, and like any other great tool, we have to use it wisely. I can injure myself with it, or I can use it as a weapon. So that's what I have been asked. That's what I have been referring to. Okay, we can use taxation not just as a cost. We can use taxation strategically. If we position taxation rightly, if we create those policies, and mind you, FBR does not make policies any further. I believe it implements those policies which are created. Actually, the issue is, I just want to chip in that it's not just the IT industry that is being targeted. You are the one who is being given exemption and 100% credit. Just ask about the other industries who are paying much more. So it's not like, we are facilitating the IT industry, and earlier it was exemption. Now it has been replaced with tax credit. And for other industries, it can reach up to, very high rates, the highest slabs in that. True. तो जैसे मैम ने बताया कि एक तो हमें exemptions हैं, लेकिन अब सवाल सारा ये ना कि हमने चीज़ों को strategically कैसे use करना है. It is a war. I can tell you right now. It is a war कि AI के आप user बनेंगे या developer बनेंगे और उसको command करेंगे. It is a war कि blockchain के आप user बनेंगे या उसके developer बनेंगे. It is a war कि आपको क्लाउड सर्विस कंप्यूट पावर ख़रीदने के लिए बहरीन और दुबई और रोमानिया जाना होगा और उनको अपने डॉलर देने होंगे, जिसको अभी तो वो बाय द वे एक वो खौफनाक चीज़ आ रही है अगले 3 से 4 सालों में, और अभी यहाँ पे हमें कितना अंदाज़ा नहीं है कि एक वक्त में आपका 6 से 7 बिलियन का आउटले वो भी होगा क्लाउड सर्विसेज का. पीपल आर नॉट लुकिंग एट इट राइट नाउ. हाउएवर, सो इफ़ वी कैन यूटिलाइज और अगर हमने वक्त पे अपनी कंप्यूट पावर बिल्ड नहीं की एज अ नेशन, इफ़ यू बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से आप पावर आउटेज होता है ना आज से 6 साल के बाद आप कंप्यूट आउटेज सफ़र कर रहे होंगे, बिकॉज यू वुड नॉट हैव द मनी टू पे फॉर इट. सो दिस इज़ नाउ द टाइम दैट वी यूज़ टैक्सेशन एज अ टूल strategically to actually steal that business from our competitors in the region. We grab everything, we get the cloud companies, so इधर आके लगाओ, तुम्हें अगला कस्टम ड्यूटी में इतनी छूट देता है, मैं तुम्हें उससे ज़्यादा देता हूँ. तुम्हें जो है वो लैंड एक्विजिशन के ऊपर इतना % टैक्स देता है, मैं उससे इतना % कम देता हूँ. तुम्हें पेरोल टैक्सेशन के अंदर सपोर्ट चाहिए, मैं वो भी देने को तैयार हूँ. Once they bring all that infrastructure, they build all those companies, they build all those setups, they hire all our people, we can dictate. We can dictate companies, we can dictate regions, we can dictate on our own future. Otherwise, हम सिर्फ यूज़र बन के रह जाएंगे. आइडिया कि वो कितना बड़ा आपका आउटले होगा. आइदर वी क्रिएट इट हेयर
and we ask the other regional countries to come and pay us or we pay them. تو میری جو ساری بات کا کرکس تھا وہ یہ تھا کہ ٹیکنالوجی بہت بے رحم چیز ہوتی ہے. آئدر آپ اس کو قابو کر سکتے ہیں یا وہ آپ کو یوز کر سکتا ہے. سو دیٹس واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو ہیئر. اور یہی چیز ہم اپرائز کرانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو اگلے 1, 2, 3 سال ہیں یہ کرٹیکل ہیں ہماری نیشن کے لیے. جو پوزیشننگ ہے اس میں ہم جو پالیسی ڈیسیجن لے لیں گے, جو اسٹریٹجک ڈیسیجن لے لیں گے, اگلے 100 سال کے لیے تھنگس کین چینج, ورنہ it will become very difficult. Right, I think جو باقی questions تھے وہ خلجی صاحب سے regarding تھے. If خلجی صاحب is online with us, if خلجی صاحب can respond to the operational questions the lady asked. خلجی صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. Can you hear me? You want us to repeat the question جو operational matters کے question تھے؟ جی اگر وہ question kindly repeat کر دیں. سر میرا ایک کوشچن یہ بھی ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ود ہولڈنگ ٹیکس اسٹیٹمنٹس آپ لوگوں نے فائل کر دیا, دیٹ وی آر سپوز ٹو فائل دا ود ہولڈنگ ٹیکس اسٹیٹمنٹس, بٹ یو نو دا میجر پرابلم وچ وی آر فیسنگ دیٹ دا سپلائز اینڈ دیٹ دا ٹیکس وچ وی آر سپوز ٹو ود ہولڈ فرام دیم, ڈو یو نو وی آر پیئنگ فرام اوور اون پاکٹ. Because sometimes when we are asked that yes we are withholding agents and we are supposed to withhold tax from you, they said no, we are not accepting this policy. This is not supposed to do. So do you know this thing we are doing it by ourselves, and until and unless we are not doing it by ourselves, this expense would not be considered as admissible expense. Second sir question is about section 65F, that according to section 65F we are tax exempted. And we are avoiding all those compliances that about the withholding tax statements, tax return file, 80%, more than 80% exports. Instead of that, bank is withholding 1% withholding tax from us, and they are saying to us that until and unless you are not providing the tax exemption certificate, you are not supposed to, we are charging the 1% withholding tax. So what would be the difference between the FDR income and the tax credit according to section 65F? جی خلجی صاحب. رضا صاحب آپ کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. اچھا جی, پہلا کوشچن ہے آپ کا ود ہولڈنگ اسٹیٹمنٹس کے حوالے سے. اور ود ہولڈنگ اسٹیٹمنٹ دیکھیں, ایک چیز تو ہے کہ آپ کی ایز اے ود ہولڈنگ ایجنٹ ٹیکس ڈیڈکشن کی رسپانسبلٹیز ہے. ٹھیک ہے, 3 میجر سیکشنز ہیں جن کے اوپر آپ کی ٹیکس ود ہولڈنگ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے جنرلی ٹیکس پیئرز کی. ایک سیکشن 149 ہے سیلری کا, ایک 153 ہے جہاں پر آپ گڈز اینڈ سروسز کا ٹیکس ڈیڈکٹ کرتے ہیں, اور تیسرا ہے آپ کا 155 جہاں پہ آپ رینٹ کا ٹیکس ڈیڈکٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ ایز اے ود ہولڈنگ ایجنٹ ان میں سے کسی بھی سیکشن میں فال کرتے ہیں تو آپ کو ٹیکس ڈیڈکٹ بھی کرنا ہے, جمع بھی کروانا ہے, اور ود ہولڈنگ اسٹیٹمنٹ فائل بھی کرنی ہے. اور یہ صرف آئی ٹی سیکٹر کی یا آپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے, یہ سب کی رسپانسبلٹی ہے. فار یور سیک ایک چیز میں یہاں پہ آئیڈینٹیفائی کر دوں کہ ود ہولڈنگ ایجنٹ کون ہوتا ہے. 149 میں ایوری امپلائر از اے ود ہولڈنگ ایجنٹ. تو اگر آپ کے امپلائی کی سیلری ٹیکسیبل ہے تو آپ نے ٹیکس کاٹنا ہے. 153 میں ود ہولڈنگ ایجنٹ کی لسٹ ہے, اس میں اگر آپ کمپنی ہیں تو ود ہولڈنگ ایجنٹ ہے. انڈیویجول اے او پی کی صورت میں اس وقت ود ہولڈنگ ایجنٹ بنتے ہیں جب آپ کا ٹرن اوور 100 ملین سے اوپر جاتا ہے. جبکہ رینٹ کے اندر کمپنی تو ود ہولڈنگ ایجنٹ ہے, لیکن انڈیویجول اے او پی اس وقت ود ہولڈنگ ایجنٹ بنتے ہیں جب سال کا رینٹ 15 لاکھ روپے سے اوپر جاتا ہے. تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ ود ہولڈنگ ایجنٹ ان سیکشنز میں ہیں, اور اگر ہیں تو پھر آپ کو سب کے ساتھ ایکول ٹریٹمنٹ ہوگا جیسے سب کے سب ود ہولڈنگ ایجنٹ ہے. اور یہ کسی کے ساتھ ڈسکریشن نہیں ہے کہ ایک سیکٹر جو ہے ود ہولڈنگ ایجنٹ ہے, دوسرا سیکٹر ود ہولڈنگ ایجنٹ نہیں ہے. سب کے ساتھ ایک جیسا ہی ٹریٹمنٹ ہے ایز فار ایز the responsibility to act as a withholding agent is concerned. اچھا, جو آپ کا ایگزمپشن سے لنک ہے وہ آپ کی ودہولڈنگ ایجنٹ کی رسپانسبلٹی کو لنک نہیں کیا گیا, بلکہ صرف اور صرف آپ کی فائلنگ کی رسپانسبلٹی کو لنک کیا گیا ہے. اور یہ بڑا اسپیسیفکلی ہم نے ایڈریس کیا تھا جب یہ اوریجنلی مارچ میں
ऑर्डिनेंस आया था तो इसको मॉडिफाई करके रिक्वेस्ट करके मॉडिफाई किया था. पहले ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए विदहोल्डिंग एजेंट के साथ भी लिंक था. नाउ इट इज ओनली लिंक्ड विद योर फाइलिंग. सो आप सिर्फ क्वार्टरली और एनुअल विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स जमा करवाएं, सो यू कैन क्लेम अ टैक्स क्रेडिट व्हिच इज मैंडेटरी. अच्छा, और अगर आप विदहोल्डिंग एजेंट नहीं है, ये भी हमने इसमें मॉडिफाई करवाया था कि अगर आप विदहोल्डिंग एजेंट नहीं है तो फिर आपको ये विदहोल्डिंग स्टेटमेंट भी फाइल करने की जरूरत नहीं है. ये आपके विदहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइलिंग के हवाले से. दूसरा आपका जो आपने फरमाया कि बैंक आपका विदहोल्डिंग टैक्स 1% के ऊपर डिडक्ट करे. देखिए, बैंक का बिल्कुल ठीक बैंक कह रहा है कि जब तक आप एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट नहीं लाएंगे, इसलिए कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये एक, या जो ये डिस्क्रिशनरी पावर है, ये कमिश्नर के पास है, जहां पर वो आपके आइडेंटिफाई करता है, वेरीफाई करता है कि आपने लीगल ऑब्लिगेशंस को मीट किया है. जो 4 लीगल ऑब्लिगेशंस हैं, एक आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, एक विदहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करनी है, एक सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करनी है और 80% पैसा पाकिस्तान में लाना है. आप ये 4 चीजें कमिश्नर को दिखाएं और कमिश्नर आपको एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट इशू करने का पाबंद है. हमने डिस्कस किया, ऑपरेशनल इश्यूज आ रहे हैं उसके अंदर, और वी आर होपफुल कि जैसा भी मैडम आयशा ने, सजाद साहब ने कमिट किया है कि इन ऑपरेशनल इश्यूज को करेक्ट किया जाएगा. तो लेकिन अगर आप ये चारों काम कर रहे हैं तो आपको एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट मिलेगा. आप ये एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो फिर आपका 1% विदहोल्डिंग नहीं होगा. और अगर आप ये एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगे तो बैंक जो है वो आपका 1% विदहोल्डिंग करता रहेगा. तो ये आपके 2 क्वेश्चंस थे. एक रज़ा साहब, इससे पहले एक क्वेश्चन रेज हुआ था, अगर आप इजाजत दें तो मैं उस पर थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ. जरूर जी. एक क्वेश्चन किसी खातून ने ही रेज किया था, और उन्होंने क्वेश्चन रेज किया था कि हम इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर पा रहे, और उसकी वजह यह है कि हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज करते हैं और अनरजिस्टर्ड पर्सन को जब एक्सपोर्ट होती है तो उसके ऊपर इनपुट टैक्स का क्लेम नहीं हो पाता. तो मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहता हूं और मैडम आयशा की और जो एफबीआर के रेलेवेंट पर्संस हैं उनकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जो है, जब आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करते हैं तो वो 0 रेटेड होती हैं, और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स 0 रेट करने वाले लोग अपना इनपुट टैक्स का रिफंड एफबीआर से क्लेम कर सकते हैं. जबकि जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज करने वाले लोग हैं उनका प्रॉब्लम यह है कि एफबीआर के, जो मैडम ने कहा कि प्राल को आइडेंटिफाई करें, वो भी हम करेंगे, लेकिन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के लिए एक इनपुट टैक्स के तौर पर क्लेम मिले, लॉफुली मिलना चाहिए, लेकिन प्रोसीजरली उसमें कुछ एरर्स हैं व्हिच वी कैन कम टू योर ऑफिस एंड एक्सप्लेन फर्दर. जी रज़ा साहब, थैंक यू वेरी मच. राइट मैम, यू वुड लाइक टू कमेंट ऑन दैट, द 0 rated point, you want to comment on that? That we need to discuss with the policy bank first, and whether we intend to go for a 0 rating of. I can't really comment on that at the moment. We can take it up with member policy, right, and see whether it's going to be 0. एक माइक दीजिएगा इधर. Do you have a question on Zoom as well? एक माइक दीजिएगा इधर. 0 rated, then we can ask them for the relevant changes in law. We have a question on Zoom as well. खलील साहब, इसमें एफबीआर के अंदर लास्ट बजट के अंदर 0 रेटेड हो गई थी, ठीक है, एंड क्लेम की ऑप्शन नहीं है, रिफंड के क्लेम की ऑप्शन नहीं है, पर आपकी एक्सपोर्ट जो है वो 0 रेटेड हो गई हुई है एज ऑफ 1 जुलाई बजट के अंदर, वो चेंज हो गया हुआ था. तो एफबीआर के आईआरएस के अंदर जो है देयर इज़ एन इशू. मेरा एक क्विक क्वेश्चन है, उस्मान से मेरी डिस्कशन हो रही थी, देयर हैव बीन सम कन्फ्यूजन, प्रॉब्ली आप या खिलजी साहब उसको क्लियरफाई कर दें. अंडरस्टैंडिंग काफ़ी लोगों की ये है कि इफ़ यू पे 1% टैक्स ऑन योर एक्सपोर्ट, इट इज़ फुल एंड फाइनल जस्ट लाइक एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स. इज इट ट्रू? एंड इफ इट्स ट्रू, then that means all private limited companies who are getting exemption, they'll be foregoing 1% of the tax, but then they will be paying 25% on a dividend instead of 15%, which will be additional tax. So can you please comment on this?
جی میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. جی جی خلیل صاحب جو ایکسپورٹ آف سیکشن 65F اور یہ سیکشن 154A کی بیسیکلی بات ہے. سیکشن 65F کے اندر 4 کنڈیشنز ہیں اور وہ آپ 4 کنڈیشنز میٹ کریں تو میٹ کرنے کے نتیجے میں آپ کو 100% ٹیکس کریڈٹ اویلیبل ہو جاتا ہے. اور سیکشن 154A جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ انہی کنڈیشنز کو ادر دین 80% کنڈیشن ان 3 کنڈیشنز کو آپ میٹ کریں تو بینک آپ کا ٹیکس کاٹے گا 1% اور یہ 1% ٹیکس جو ہے یہ فائنل ڈسچارج آف ٹیکس لائبلٹی ہو جائے گا, یعنی FTR میں آپ کا ٹیکس چلا جائے گا جو کہ آپ نے 154A کے اندر آپ کے پاس ہو جائے گا. اچھا, جو انہوں نے دوسری بات کی کہ جی یس اگر آپ کی انکم ایگزیم فرام ٹیکس ہے تو ایگزیم فرام ٹیکس کی صورت میں ڈیویڈنڈ کے اوپر جو ٹیکس ریٹ ہے وہ اس وقت 25% ہے اگر آپ ایگزیمپٹ انکم والی اینٹی ہیں. جبکہ ہم یہاں پر جو بات کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری انکم جو ہے نا یعنی 65F کے اندر ایگزیمپٹ فرام ٹیکس نہیں رہی بلکہ ہماری انکم ٹیکس کریڈٹ والی ہے. اور یہاں پر اس کے اندر لیکن اس کے اندر جو 154A والی ہے وہ 1% والی ہے تو وہاں پر 25% نہیں ہوگا, لیکن 65F والوں کو جو ہے یہ پرابلم آ سکتا ہے کہ وہ 25% ڈیویڈنڈ انکم کے اوپر ان کو ٹیکس دینا پڑے. Right. We have a last question in the back. Assalamu alaikum. Actually, I'm representing a software house. We 100% export our software. ہمارا local کوئی income نہیں ہے, ہمارا کوئی client نہیں ہے. Issue یہ ہے that when this whole 154A exemption compliance was started, we filed our case. It got rejected once. Then we applied for 122B application to get the rejection reversed. Then again we got the 154A applied. اب ہمیں انفارچونیٹلی وی آر ون آف دوز فیو کمپنیز جن کو ایگزمپشن مل چکی ہے اور الحمدللہ ہمیں 3 مہینوں کی ملی. آئی نو فیو پیپل جن کو 15 دن کی ایگزمپشن بھی ملی ہے صرف. سو آور ایگزمپشن ول لاسٹ ان دا منتھ آف مارچ 2022. بٹ مائی کوشچن از اس ہمارے جو گرانٹ ہوئی ہے ہمیں اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ وٹ ایور ٹیکس دیٹ ہیز بین ودہیلڈ بائی دا بینک ول بی ڈپازٹڈ ان دا ٹریجری اینڈ از نان ریفنڈیبل. سو آن دی ادر ہینڈ وین میم آنریبل کمشنر سیز کہ ہمارا یہ ٹیکس کریڈٹس اینڈ ٹیکس ایگزمپشن آر دا سیم تھنگ, سو وین وی آر بینگ ٹولڈ دیٹ وی آر پرووائڈیڈ دا ایگزمپشن, وائی از دا ٹیکس دیٹ واز آلریڈی deducted cannot be refunded? Because during this whole process we were always complied with all the documents that were required. ہم ڈاکومنٹس لے کے گھوم رہے تھے بٹ کوئی ڈاکومنٹس کلیکٹ ہم سے لینے والا نہیں تھا. لیکن یہ کہ ان 3-4 مہینے میں وی آر اے بزنس, وی ہیو ٹو انکر آور کاسٹ, وی کیپٹ انکرنگ آور کاسٹ اینڈ وی کیپٹ گیٹنگ آور وائرز ریئلائز جس سے ہمیں 1% ہر مہینے پے کرنا پڑا. ناؤ وی آر بینگ ٹولڈ کہ جی وہ تو ریفنڈیبل بھی نہیں ہے, سو یو گائز ہیو ٹو لائک یو نو جسٹ موو آن فرام اٹ. I don't understand کہ if it's an exemption then we should be given the refund. If it's not an exemption, just a credit, then it should be stated as a credit and not just be like, you know, deceived in an exemption kind of envelope over here. That's my question. Right. We welcome Secretary IT, Dr. Sir Rajput as well. Thank you, sir, for joining us. Ma'am, do you want to respond? Yeah, sir, aap respond karna chaheं the question. اس کے لیے I would say that for individual problems that, for example, if they feel that their exemptions are not being refunded or I can't offhand comment on it because I need to see the whole case. Right. So I'll really prefer if this person is having a problem, we will go through the entire facts of the case. Because at times there are other, I can't really pass a statement at the moment until and unless I've seen the entire facts of the case. Right, truly. Khalil sir, you'd like to comment on the problem? جی please. راز صاحب اس میں جو بیسیکلی جو ایگزمپشن سرٹیفکیٹ میں جنرلی جو لکھا ہوتا ہے نا کہ اٹ از ٹو بی ڈپازٹڈ ان دا گورنمنٹ ٹریجری, وہ بینکس کے لیے ہوتا ہے کہ بینکس ان کو پیسے ریفنڈ نہیں کریں گے یا واپس نہیں کریں گے جو پیسے انہوں نے کاٹ لیے ہیں. However, جن صاحب کا یہ ٹیکس 1% غلط ڈیڈکٹ ہوا ہے اور جو یا ان کے علاوہ کسی کا بھی اگر ٹیکس غلط ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے یا فار ایگزامپل جیسے بجلی کے بلوں یا ٹیلی فون بلوں پر بھی جتنے بھی ٹیکسز ہیں یہ سارے کے سارے آپ اینول ٹیکس ریٹرن کے اندر کلیم کر سکتے ہیں اور اس کا ریفنڈ آپ کا ڈیو بنتا ہے اگر آپ نے وہ ساری شرائط میٹ کی ہوئی ہیں جن کی وجہ سے 100% ٹیکس کریڈٹ ملتا ہے.
تو آپ کو ابھی ریفنڈ نہیں ملے گا, لیکن ریٹرن کے ساتھ آپ یہ ریفنڈ کلیم کر سکتے ہیں. All right, with that, we would like to thank our panelists, Hasni Saab, we would like to thank Ma'am Aisha, we would like to thank Sajjad Azhar Saab, Barkan Saab, Usman Nasir Saab for joining us to the panel, Khilji Saab who joined us remotely. Thank you to the panelists. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. With that, we would be moving to the final session of the day, the closing session. We had a Secretary Suhail Rajput has just joined us. We are thankful to him, so we had a very good discussion, just like Lahore and Karachi session. We are thankful to the FBR team for being here. For the closing session, I would like to request Ms. Aisha Khalid, Chief Commissioner, Regional Tax Office, to please share his thoughts. You have been listening a lot. There was a lot of the frustration in the room. Thank you for taking that as well. But going ahead, you have announced the focal person as well. So what's your overall thought? We would like to hear from you in your closing remarks, please. So if you can please join us here. Thank you so much for giving us this opportunity to come here and explain our point of view as well. So I've taken note of all the issues that are cropping up and that people are facing while filing their income tax returns and while claiming their exemption certificates and processing of their different claims. So I think the best way forward would be that, like we have said, we are going to nominate a focal person and we'll be sharing the name and their contact details. And the best thing would be that we'll also be coordinating with the team here and hold certain awareness workshops with our team at the different formations in FPR, so that everybody is on board and they are aware of the standard SOPs. Actually, the nature of job is very diverse in tax departments. It's not just IT. There are different nature of industries that we are dealing with, and there are different sorts of issues. While attending this conference, we have gotten awareness that there are lots of things that our staff and the people at ground might not be aware of. There are certain terminologies and there are new things that are coming up. So I think we'll hold those awareness workshops, and I think that will lessen some of the problems that you are facing. And then you have these bodies which can interact with us and deal with the individual problems as well. So the bottom line is that the government is very much focused on giving a boost to the IT industry, and we stand committed to collaborating with the industry in that and with the teams. Thank you. Thank you so much, ma'am. We are thankful to you, to Sajjad Azhar Saab, for taking us time and spending a half day with us. With that, I would now like to request Dr. Suhail Rajput, Secretary IT, for his closing remarks, please. Please, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you all for attending this session this afternoon, and I especially thank the colleagues from FBR for joining us, because I know that they are very busy collecting taxes, so it's not easy to find out the time. Chairman FBR was also supposed to be here, but then he was called for an urgent meeting at PM House, so he couldn't make it. But the whole purpose of this exercise, we had a session at Karachi and another session at Lahore as well. The whole purpose is to understand each other better and to work for a common objective. And what is the common objective is to see a growth in our economy, the crisis we are facing in terms of trade deficit, the current account deficit, we all know that. So it's our common goal, and until the government, its various agencies like FBR, Ministry of IT, and the private sector,
they come along each other, shake hand with each other, and then work for that common objective, then I think we will be able to develop and progress as a nation. Otherwise, if we keep working in silos, though we have different roles and responsibilities, I understand FBR's primary role is to collect more revenues for the country, and this is the job they are supposed to do. The industry, particularly the IT industry, has a potential to give this country that kind of economic impetus and growth which will bring in more taxes. Once this industry grows in the medium to long term, it will be a great enabler for overall economic growth in the country. And once the economic growth, the GDP increases, the tax collection will automatically increase. So instead of having that short-term view of collecting whatever we can collect at this moment in time or during the current financial year, though I understand the pressures, being from the public sector, I know the targets are given and it's important to achieve those targets. But in short term, we might be penny wise and pound foolish. We may lose a bigger chunk of pie in future. So I understand, because I intended to join this session much earlier but was caught up in another meeting, so I didn't listen to the entire discourse which happened here. But जो मैडम अभी कह रही थी, मैंने सुना है कि मकसद यही था कि एक दूसरे की प्रॉब्लम्स, इश्यूज को बेहतर रियलाइज किया जाए. और मेरा ख्याल है बरकान भी एग्री करेंगे कि जो सेशन हमने लाहौर में और कराची में किए उसका काफ़ी फ़ायदा भी हुआ. जो अब टैक्स रिजीम है मुल्क में, उसमें जो टैक्स क्रेडिट मिलना है, उसमें इनिशियली क्योंकि ये रिजीम इसी माली साल में चेंज हुई थी, तो इनिशियली काफ़ी कन्फ्यूजन था, बहुत सारे ग्रे एरियाज़ थे जिसमें इंडस्ट्री को भी प्रॉब्लम हो रही थी. नीचे लेवल पे मेरे ख्याल है टैक्स कलेक्टिंग जो ऑफिसर्स थे वो भी इतने ज़्यादा क्लियर नहीं थे, तो लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम द इंडस्ट्री, जिसकी वजह से फिर कन्फ्यूजन ज़्यादा हुआ. बट अभी मेरे ख्याल है सूरत हाल जैसे जैसे टाइम गुजरा है बेहतर हो रही है. ख़ास तौर पे ये फोकल पर्सनस का जो हमने कराची में भी और लाहौर में भी एक्सपीरियंस किया, उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है. तो उससे कम्युनिकेशन आसान हो जाती है. आपको पता होता है कि देयर इज़ वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वेयर यू कैन गो एंड टेल योर प्रॉब्लम्स. तो मैं बात कर लूँगा चेयरमैन FBR से भी. वी विल ट्राई टू हैव अ फोकल पर्सन नॉमिनेटेड फॉर इस्लामाबाद एज वेल. और उसमें अगेन आई विल एंड अप माई शॉर्ट स्पीच शेयर विद दी कंक्लूजन के ख़ास तौर पे प्राइवेट सेक्टर के जो इंडस्ट्री के लोग यहाँ मौजूद हैं उनके लिए कि गवर्नमेंट इज़ देयर टू सपोर्ट यू. आपके जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वी सीरियसली वांट टू रिजॉल्व दोज. मतलब एक तो है ना कि सिर्फ लफ्ज़ मुंह से अदा करने के जी, बट वी रियली मीन इट. चाहे उसमें FBR हो या मिनिस्ट्री ऑफ IT हो या इवन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हो जो फॉरेन एक्सचेंज रिजीम के हवाले से. बट ऑब्वियसली चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होती, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती, बहुत से बैरियर्स होते हैं. तो इस तरह की अगर हम सेशन रिपीटेडली करते रहेंगे, बार बार करेंगे, तो शायद हम एक दूसरे की बात ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ भी सकेंगे. और बहुत सारे मसले सिर्फ इस तरह रिजॉल्व हो जाएंगे कि अगर हम दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू उसकी जगह पे बैठ के समझ सकें कि मसला क्या है. तो inshallah we will look forward to having more productive engagements in the future and to make it a constant practice to engage it with industry. अभी मेरे ख्याल है हम एक और बल्कि मैं यहाँ बता भी देता हूँ, प्रॉब्ली 12 को हम करेंगे. 12 को इंशाल्लाह एक और सेशन इंडस्ट्री के साथ करेंगे जिसमें एक्सपोर्ट के हवाले से जो इंसेंटिव गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री के लिए एलोकेट किया है इस माली साल में, वो किस तरीके से उस पर अमल दरामद होगा, वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो हम इंडस्ट्री के साथ बैठ के क्लोज डोर भी हमने सेशंस किए हैं आपके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, बट एक ब्रॉडर सेशन भी करेंगे. और उसके बाद इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसी महीने के दौरान गवर्नमेंट की वो स्कीम भी रोल आउट हो जाए जिसमें फिर जो भी रेमिटेंसेस आप पाकिस्तान के लिए लेके आते हैं और जो कि बहुत ही ज़्यादा मुल्क की ज़रूरत है, तो उस पर जो लोग वो काम कर रहे हैं उनको गवर्नमेंट रिवार्ड भी कर सके फाइनेंशियल टर्म्स में. जैसे गुड्स की एक्सपोर्ट्स पे कुछ स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, लेकिन सर्विसेज की एक्सपोर्ट पे फ़िलहाल कोई गवर्नमेंट की इस तरह की इंसेंटिव स्कीम नहीं थी.
तो first time while realizing the potential of the IT industry and while realizing the great job you are doing for the country in terms of bringing in export remittances to the country, the government has decided to announce this scheme, and this is going to be at least for 5 years. So it's not one-off intervention by the government. ये इंशाल्लाह 5 साल तक होगी और जो भी companies इसमें demonstrate करेंगी performance और enhance करेंगी अपने पिछले साल के targets पे, उनको इंशाल्लाह government sufficient उसके लिए reward करेगी. Thank you very much. Thank you, Secretary Sir, for the kind words. We would like to praise you. Ma'am Aisha has agreed us to do the closed loop session as well, and sponsor, I think if you agree, जो second phase हमने करना है, if you can have the closed loop sessions with the Lahore team and the Karachi team and the Islamabad team as well, what we have been discussing in the panel discussion कि जो IT industry जिस तरह काम कर रही हैं, जो MNC के global operations हैं, we need to share them with the FPR colleague as well, so that we can understand the basic architecture behind. With that, ladies and gentlemen, we'd like to go to the final session. We got a token of appreciation for our FPR colleagues. So for that, I would like to request Dr. Suhail Rajput Sahab to join us here, please. Usman Sahab, please join us on the stage. Brother, if you can join us also. So we have a shield. We have a shield for Mr. Sajjad Haider, Commissioner IR RTO Islamabad. Thank you, sir, for joining us. So please. Thank you, Sajjad sir, for being here with us. We have a shield for Ma'am Aisha Khalid, Chief Commissioner, Regional Tax Officer as well. Thank you, ma'am, for spending this time with us. With that, I would like to request everyone to please join us for a group photo here at the stage, and then we will be proceeding for the tea. So please come us and join for the group photo. That is conditioned with the group photo. So please join us. हम स्टेज काफी बड़ा है, मेरे ख्याल में अगर सारे भी आ जाएंगे तो हम पूरे आ जाएंगे. जी जी.